हमारे अगले दो गेस्ट स्पीकर से। पहले जो हमारे मैं जिनका परिचय कराना चाहूँगा, प्रोफेसर के रामसुब्रमण्यम। Professor K. Ramasubramanian is distinguished professor at IIT Bombay, currently serving in the cell for Indian Science and Technology in Sanskrit Department of Humanities and Social Sciences. Professor Ramasubramanian holds the esteemed title of Vidvat Pravara, conferred by the Shankaracharya of Sringeri Peetham, in recognition of completing a rigorous 14-semester program in Advaita Vedanta. His diverse roles, including serving as a council member for International Union of History and Philosophy of Science and Technology, a member of Second Sanskrit Commission and Central Sanskrit Board. ये हमारा सौभाग्य है कि प्रोफेसर आज हमारे बीच में हैं और आज हमारे इस जो टॉपिक है इसके माध्यम से हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट स्पीकर हैं उनसे मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। Shri Clemency Montelle is a distinguished professor of mathematics at University of Canterbury, New Zealand, holds a Ph.D. from Brown University, and boasts a Fulbright scholar background. She dwells into ancient mathematical manuscripts in Greek, Latin, Sanskrit, Arabic, and cuneiform. So, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और मेरा खास करके कि मैं परिचय करा रहा हूँ। सो अब मैं चाहूँगा कि अब प्रोफेसर पोडियम पर आएँ और आगे के प्रोग्राम को ले जाएँ। धन्यवाद। Namaste. I am happy to share this platform with Professor Clemency Montelle. तो हम दोनों शायद 12 साल पहले मिले थे। तो वहाँ कहीं कॉन्फ्रेंस हुआ था केरला में। ओ ये तो ऑन नहीं हुआ, इससे करें क्या करना है? ये मैथमेटिक्स में इंटरनेशनल कांग्रेस फॉर मैथमेटिशियंस ऐसा होता है। सुबह बताई थी हमारी तन्या, तो फील्ड्स मेडल ऐसा बोलते थे ना, तो वो तो इसमें वितरण किया जाता है। तो इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियंस, तो उसमें शायद 2000-3000 लोग कम से कम इकट्ठा होंगे, दुनिया भर से आते हैं। तो वो एक बार 2010 में इंडिया में हुई थी, तब ये वहाँ आई थी। तो हमारा पहला मुलाकात उधर हुआ। ओके, हाँ, तो तब हमें परिचय मिला कि तो ये भी संस्कृत में काम कर रही है, तो इंडियन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, सो इन सब्जेक्ट्स को लेके। तो उन्होंने हमें वहाँ बुलाया, फिर वे यहाँ आई। तो ऐसा हम मिलके भी कई पेपर लिख चुके हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी थोड़ा ज़्यादा काम किए हैं। तो उसी हिसाब से मैंने सोचा कि हम दोनों मिलके ही बात करेंगे। और एक भी चीज़ है, तो वो न्यूजीलैंड की इंग्लिश में बात करेगी, तो अंग्रेज़ी जो अच्छे जानते हैं उनको लिए भी थोड़ा तकलीफ होगा। I said even people who are quite conversant in English may find it difficult to understand the New Zealand English first. तो इसलिए हम दोनों सोचे मिलके ही इस सब्जेक्ट को आपको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द बैकग्राउंड। नाउ I will present to you some parts, फिर उसको बुला के हम इधर बताने को बता देंगे, ठीक है। So here when we are looking into this ancient text, ये हमें पहले किस के लिए करना है ये सोचना है। कालिदास आप सब जानते होंगे, तो उन्होंने मालविकाग्निमित्रम करके एक नाटक लिखे हैं। प्रसिद्ध नाटक क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो मालविकाग्निमित्रम एक दूसरा नाटक है, उसमें वे लिखते हैं पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम
नवमित्यवद्यं संतः परीक्ष्य अन्यतरद् भजन्ते मूढ़ः परप्रत्यय नेय बुद्धि ही, ऐसा लिखते हैं। तो जो पुराना चीज़ है इसके हेतु से ही वो अच्छा ऐसा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पुराणमित्येव न साधु सर्वम। सो नया है इसलिए इसको छोड़ना वो सोच भी ठीक नहीं है। न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे दोनों को लेके इसमें से क्या हमें लेना है ऐसा सोच के उसको लेंगे। वही बोलते हैं संतः परीक्ष्य। परीक्षा का मतलब परीक्षा करके किसकी फ़ायदा है ये सोच के, अन्यतरद् भजन्ते, इसको लेते हैं या उसको लेते हैं। मूढ़ः जो बेवकूफ़ है, परप्रत्यय नेय बुद्धि ही, दूसरे जो बताते हैं उसके हिसाब से चल जाता है। ठीक है, तो ऐसा वे बताते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं साइन, आप लोग शायद हमारे ग्रंथ को नहीं देखे होंगे, मैं भी ऐसा ही था। तो एमएससी जब तक किया तब तक मुझे एक भी किताब पता नहीं जिसमें गणित शास्त्र हो या दूसरा कोई शास्त्र हो। मुझे तो पता है कि वेदांत है, वेद है, ये सब है, वो सब है, ये तो मुझे पता नहीं था। फिर इसको देखने से हमें पता चला कि यहाँ भी कई चीज़ अच्छी चीज़ है जिसको हमें लेना है। तो इसलिए ही थोड़ा इसका परिचय हम करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो वही लिखे हैं। तो माइंडलेस ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पास्ट इज काउंटर प्रोडक्टिव, इक्वली काउंटर प्रोडक्टिव विल बी डाउनराइट कंडमनेशन। ठीक है, यह बता के आगे जाते हैं। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का परिचय देते हैं। कल भी थोड़ा हुआ, मैंने सुना, तो वो अंश जो हुआ है वो अंश ज़्यादा नहीं बताएंगे, और ज़्यादा अंश जो लेना है उसको ही हम अभी इधर आपको सिखाएंगे। ये किसके लिए हमने किया? Why did this trigonometry develop here? So if you look into that, the most important thing is so calculating the planetary position. यहाँ जो चित्र देख रहे हैं आप, इसमें सूरज है और यहाँ चंद्रमा है। ठीक है, आप सब तिथि जानते होंगे, एकादशी, द्वादशी, उसकी गणना कैसी होती है? नहीं, 15-15 दिन तो नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा कम भी होगा, ज़्यादा भी होगा, वो सब ठीक है। मैं उसका गणना कैसा होती है, आज एकादशी है, आज अष्टमी है, हम कैसा गिनती करते हैं? सूरज और चंद्रमा की जो फर्क होती है उसको लेके करते हैं। ठीक है, जब दोनों एक ही रेखा में होंगे तब अमावस्या होती है, जब अपोजिट दिशा में होते हैं तब पूर्णिमा होती है, फिर ऐसा चलती है। तो उसकी गणना तो करना है, उसके लिए मैथमेटिक्स चाहिए। तो उसी हिसाब से बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले इन्होंने बहुत गणित किया है, वहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, ये सब तो वहाँ से शुरू होता है। ठीक है, इसको मन में रखना। तो इसलिए हम पहले जो हुआ था उसको लेके हम बताना चाहते हैं। सो दिस प्लानिटरी पोजिशंस प्ले ए वेरी वेरी क्रूशियल रोल। ये सिर्फ तिथि की निर्णय के लिए नहीं है। तो जो भी हमारे काम होता है, तो एग्रीकल्चर भी हो या इधर से सेलिंग करना हो, उधर से कुछ करना हो, ये सब के लिए, या बर्थडे बनाना हो, ठीक है, ये बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो भी है। तो 1 साल हुआ कैसा पता चलेगा? जब तक हम नई गिनती करेंगे। सो गणना तो इस सबके लिए चाहिए। और विशिष्य ये ग्रहों की गणना, सूरज और चंद्रमा की पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए, तो उसको करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत ही होती है। ठीक है, दिस इज ए बैकग्राउंड। ठीक है, वुड लाइक टू टेल जी? So we've looked at some of the scientific reasons for why trigonometry was developed, but some of these Sanskrit authors themselves write in their texts the importance of trigonometry. For instance, many of you would have heard of Bhaskara. Would have heard of the very famous, eminent mathematician Shankaracharya, who was born in 114 of the Common Era.
And he has in one of his works a beautiful metaphor or an analogy for sines and cosines and how to understand them. So it's sort of to get the picture in the student's mind before they look at some of the technical details for just how important these things are, as well as how to imagine them geometrically. So there's a verse here. Tantubirudvatiryak ruparnibado tratataiva golaha dokotijivviramum pravaktum jyotpatimeva pratamam pravakshye. Very, very good. So maybe you don't understand my New Zealand English, but Sanskrit will be a bit better. Shall I switch to Sanskrit? So this translated reads as just as the fabric, the Sanskrit word for fabric or cloth is pata, is made of warp and weft threads. So of course I, very much when I come to India, marvel at your beautiful fabrics that you can buy. So the warp and the weft of the fabrics. So a very common analogy to appeal to every day. So too the studies of spherics, gola, is crisscrossed with sines and cosines. And we'll see quite soon why this crisscross is important, because for all of you who are teaching students modern trigonometry, you teach trigonometry, sine, cosine, and tangent as ratios of, do you teach them by SOHCAHTOA? Is that how you teach them? So ratios, sine equals opposite over hypotenuse, cos equal, etc. However, this orientation is very much to do with line segments that are equivalent to arcs of a circle, and so then you get the very crisscross geometrical analogy. So Bhaskara says, because of this, I will firstly narrate the Jotpati. Jotpati is a Sanskrit compound between Jya, which we'll look at a little bit what this means, and Utpati, which means to generate, to elaborate on this. So he's giving his motivation, but a very interesting metaphor for sines and cosines. Okay, ma'am. Just a minute, ma'am. Yeah. મેમ શું કહેવા માંગે છે? મેમ એવું કહે છે કે અત્યારે મેમ જે ટોપિક જે છે એ છે ભાસ્કરાચાર્યનો, જેને ટ્રિગ્નોમેટ્રી વિશે ઘણી બધી વાતો કરી છે. તો જે ટ્રિગ્નોમેટ્રી છે એમાં શું આવે છે? સાઇન આવે છે, કોસાઇન આવે છે, ટેન્જન્ટ ટેન આવે છે, જે ઓપોઝિટ સાઇડ્સની રિલેટેડ આપણે એંગલ્સ ગોતતા હોય છે. તે ભાસ્કરાચાર્યએ શું શોધ કરી છે ટ્રિગ્નોમેટ્રી, એની વાત મેમ કરવા માંગે છે. થેન્ક યુ. You're going to take Nityananda? Okay. Okay, we can chant the verse together. Acharyavarya ganakastayeva jananti jnanayanopapatim tatodhigantum mahajado vanchati madrishopi. Okay. तो हमने ये है नित्यानंदा करके 17th सेंचुरी में ये ज्योतिषाचार्य थे. ये नित्यानंदा तो शाहजहां जानते होंगे, सुने होंगे. शाहजहां के कोर्ट में काम कर रहा था. तो हर एक राजा के कोर्ट में एक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, ज्योतिषज्ञ होते हैं. तो नित्यानंदा वहाँ थे. तो नित्यानंदा एक बड़ा किताब लिखा है, सर्व सिद्धांत राजा. देखिए, सर्व सिद्धांत राजा ऐसा किताब का नाम है. तो उस किताब में 3 अध्याय होते हैं. ये गोलाध्याय जो होता है, तो उसमें पूरा स्फेरिक्स के बारे में डिस्कशन होती है, और गणिताध्याय होता है, ये सब होता है. तो उसमें जब साइन फंक्शन के बारे में ये इंट्रोड्यूस करते हैं, तब ऐसे लिखते हैं, आचार्यवर्या गणकास्तयेव जानन्ति ये ज्ञानयनोपपत्तिम. ज्ञानयनम का मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ साइन. अंडरस्टैंड? कंप्यूटेशन ऑफ साइन इज कॉल्ड ज्ञानयनम. और ज्ञानयन की जो उपपत्ति होती है, तो आजकल आप लोग कई अभी नए टीचर जो हैं, तो वे शायद टेबल नहीं देखे होंगे.
साइन के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में बटन दबाएंगे, ठीक है। तो वो कैसा करता है कैलकुलेशन, वो तो पता नहीं है आजकल, ठीक है। वो सिर्फ नंबर निकाल देता है, तो कैसा अंदर करता है इसकी पहचान कई लोगों को नहीं होती है, ठीक है। तो ये बोलते हैं ज्ञानयन की उपपत्ति। ये टेबल जो है, हम जब करते थे स्कूल में पढ़ते थे तब एक टेबल होता है, बुक क्लार्क्स टेबल ऐसा होता है, उसको देख के हम साइन निकालते हैं। तब भी हम भी नहीं जानते थे कैसा वो टेबल बनाया गया। टेबल कैसा बनाया गया मुझे, ओ भैया ओ, हम टेबल कैसा बनाते हैं वो तो हम नहीं जानते थे। अब कैलकुलेटर कैसा करते हैं वो भी नहीं जानते हैं। तो ये बोलते हैं ज्ञानयन की उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब ये किस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। ज्ञानयनोपपत्तिम ये जानन्ति, जो इसको जानते हैं उनको ही हम मैथमेटिशियन समझेंगे, ठीक है। आचार्यवर्या गणकाः तयेव जानन्ति ये ज्ञानयनोपपत्तिम। तो अभी बोलते हैं ततोधिगंतुम पदवींच तेषां महाजडो वंछति मादृशोपि। मैं भी मैथमेटिशियन ऐसा लोक में जब लोग बोलते हैं तभी खुशी हो जाता हूँ। इसलिए मुझे जो अवगम है इसको मैं किताब के तरफ में आपके समक्ष लिखता हूँ, जिससे मुझे भी गणक लोग मानेंगे, ठीक है। अधिगंतुम पदवीम मीन्स मैं इस पोजीशन में बैठना चाहता हूँ, मुझे भी मैथमेटिशियन लोग बोलेंगे, तो इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं सब जानता हूँ करके आगे लिखते हैं, ठीक है। महाजड़ो वांछति मादृशोपि। और ये भी बताते हैं, ये आपको जानना है, वो आज सुबह जब डॉक्टर रमा कल्याण इधर बात रही थी, ठीक है, वो बताती थी, तो प्रूफ नहीं है ऐसा कई लोग बोलते हैं करके, ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलते हैं देखिए, यत्किंचित् गणितं गृहस्य गणको जानन् विना वासनां पृष्टस्सन् अपरेण गोल विदुषा प्रश्न प्रपंचोक्तिभिः किं ब्रूते प्रतितं तदुत्तरमयं गोलागमाज्ञो यतः तस्मात् गोल विचार चारु रचनां वक्ष्ये सतां प्रीतये। ऐसे बोलते हैं। यह सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए नहीं है, जो स्पेरिकल ज्योमेट्री होती है, स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री होती है, वो सब का तात्पर्य ग्रहण करके फिर ही हमें समझाना चाहिए। वो जब तक नहीं जानते हैं तब तक सभा में जाके कोई पूछेगा तो वे कुछ नहीं जानते पाए। इसलिए उनकी मदद के लिए मैं एक किताब लिख रहा हूँ। ऐसा करके ये आगे प्रतिज्ञा करके आगे जाते हैं। ये देखिए, मैं अभी ये चित्र से यही दिखाना चाहता हूँ। सो होराइजन का मतलब हम जब जमीन में जहाँ खड़े होते हैं, ओके, क्षितिज बोलते हैं होराइजन। हाँ, क्षितिज बोलते हैं ना। इसके ऊपर जब सूरज निकलता है तब 6 घंटा हो जाता है, ठीक है, शायद लगभग, ठीक है। वो साल में इधर उधर चलता ही है। इसलिए ये देखिए, ये तो एक्लिप्टिक है, ये लाल वाला जो है इसमें सूरज जाता है, और इक्वेटर इधर है, ये हॉरिजॉन ऐसा है। ये सिर्फ इतने इसके लिए दिखा रहा हूँ। ये गुजरात में कब सूरज निकलेगा, इस महीने में 6 महीने छोड़ के कब निकलेगा, इसको हमें पकड़ना है। तो ये सब के लिए चाहिए गणित, ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। तो ये तो बहुत सालों से निकालते थे, हजारों साल से। तो यही है इसका मुख्य कारण ट्रिग्नोमेट्री को ठीक पहचानने के लिए। ये यहाँ है, ये प्लानिटरी पोजीशन, ये सब है। देखिए इधर साइन इनवर्स है, ये साइन है, ये डेल्टा है, ठीक है। ये सब हम थोड़ा मॉडर्न टर्म्स में दिखाते हैं आपके लिए। ये साइन फाई, ये तो लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड रेखांश नहीं, अक्षांश बोलते हैं ना, अक्षांश बोलते हैं। ये अक्षांश निकालना है हर एक जगह पर, तभी हमें पता चलेगा सूरज कब निकलेगा। तो चेन्नई में कभी होगा, गुजरात में कभी होगा, कश्मीर में कभी होगा, ठीक है। इसके लिए अक्षांश की पहचान होनी चाहिए। तो इसको कैसा करेंगे, और सूरज ऐसा जाता है, तो साल में कभी कभी ऐसा होती है ना छाया, कभी कभी देखिए ऐसा छाया होती है।
तो इधर से उधर जाता है, उत्तरायण दक्षिणायन सब बोलते हैं, इसको भी हमें निकालना है। तो वही है डेल्टा इधर, ठीक है। डेल्टा का मतलब सूरज, इक्वेटर को विषुवत वृत्त बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त, राइट? विषुवत वृत्त वही, हाँ, नो, विषुवत वृत्त, इक्वेटर का क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त। हाँ, ये देखिए वो विषुवत वृत्त है और सूरज जो जाता है, इनमें जो अंतर होती है वो विषुवत से, विषुवत को साल में 2 बार स्पर्श करेगा, बाकी सभी समय ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं, और कितना ऊपर है कितना नीचे है, इसको ही इधर डेल्टा में हम दिखाते हैं, ठीक है। वो साइन डेल्टा चाहिए, कॉस डेल्टा चाहिए, कॉस फाई चाहिए, सब कुछ चाहिए, इसलिए हमें ट्रिग्नोमेट्री सीखना ही चाहिए। तो ऐसा ये किताब के आगे आगे बता देते हैं। ये और भी देखिए इधर, तो सूरज कितना दूर पर है, ठीक है, ऐसा वृत्त में जाता है, ये भूमि ऐसा घूमती है, तो यहाँ से इतना दूर पर सूरज है, इधर देखिए। तो कभी कभी इसमें ही चलेगा, वो विषुवत दिन में चलेगा, तो इसको निकालना है। और दूसरा राइट हैंड साइड में देखिए, सो ये टाइम, सो सूरज जब आसमान में है तो हम एक दंड लगाते हैं, उसकी जो छाया गिरती है उस छाया से समय को ठीक तरह हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी तो हमें क्या हो गया, तो यहाँ ईस्ट में वेस्ट बंगाल से शुरू होकर गुजरात तक, या मिजोरम से शुरू होकर गुजरात तक एक ही समय डाल दिया हमने। तो इसलिए मैं सुबह आज जब आ रहा था, गुजरात में 7:30 हो गया, तो फिर भी सूरज नहीं आया था। तो कलकत्ता में होंगे तो 5 बजे ही निकल जाता था। तो ऐसा होता है। तो ये जो टाइम है इधर देखिए, ये टाइम जो फॉर्मूला से आता है वो टाइम लोकल टाइम होगा, ठीक है, ये तो लोकल टाइम होगा। तो ये भी ये जानने के लिए भी एक फार्मूला है, ठीक है, ऐसा एक फार्मूला होता है। तो ये सब में ट्रिग्नोमेट्री आती है, ठीक है, बस। Okay, so we've seen lots of motivation for being able to compute sines and cosines and related trigonometric functions. However, our ancient friends did not have a calculator with a button that says SIN on it, and these had to be computed by hand and in various ways and compiled. I think you mentioned it before, into numerical tables which would be consulted by students and practitioners alike. And so, as I mentioned before, the modern conception of the sine or trigonometric functions are very much done in terms of ratios, but here we have very much, just like the warp and the weft of fabric, a very geometric conception of sines. So in fact, if you don't remember anything else today, just remember the diagram of these circles where you have an arc, any size, here's your arc, and you have a related line segment here. So this is why it's so incredibly relevant to astronomy, because of things that happen in the celestial sphere in the heavens. So for any given arc, what is the line segment associated with that? The Greeks had a solution for this, but it was very inelegant. And they dealt with the chord function, which is not as neat and quite cumbersome mathematically. The genius of Sanskrit authors. Oh, Clemency. Yeah. Or recording. Do you want to translate? Yeah, translate. Yeah. મેમ એવું કહે છે કે જે આપણે સાઇન ને કોસના જે એંગલ્સ બધા ગોતતા હોય એ સ્ટ્રેટ લાઇન્સ માટે હોય, જે એંગલ હોય હાઇપોટેનસ, જે સાઇડ છે એ બધી સ્ટ્રેટ લાઇન્સ માટે હોય. બટ જે આપણે અત્યારે જ્યોમેટ્રીમાં જે અર્થ છે કે જે એસ્ટ્રોનોમીમાં આપણે જોઈએ છે એ બધા એંગલ મતલબ કર્વ છે, તો એની ઉપર આપણે સાઇન ને કોસાઇન કેવી રીતે લગાડી શકીએ? તો એના માટે આપણે કોર્ડ જોઈએ છે, અને એ કોર્ડ ગ્રીકમાંથી એ લોકોએ કીધું કે જે આર્ક છે એની બદલે આપણે કોર્ડ ઉપર ચેક કરશું.
અને આ આઈડિયા જે હતો આપણે આર્કની બદલે જે કોર્ડ ઉપરથી મેજર કરતા હતા એંગલ થીટા એ આઈડિયા બરાબર નથી એ છેલ્લે આઈ થિંક મેમ બોલશે. So really, the brilliant insight that Sanskrit mathematicians had was to take half the chord of double the arc. In other words, here's your arc, double the arc, half the chord to find the sine. And when you're dealing with that half the chord of double the arc, you've got these right angled triangles which are much easier and slick to compute. એટલે જે આપણે આર્ક જે જોઈએ છે એની ઉપર આપણે જે એંગલ ફાઇન્ડ કરીએ એ આર્ક મેમે લખ્યું છે હાફ ધ કોર્ડ ડબલ ધ આર્ક. જે આર્ક છે એ ડબલ થશે. આપણે કોર્ડનો હાફનો ફાઇન્ડ કરીએ કે આર્કનો આખો ફૂલ ફાઇન્ડ કરીએ એ બેનો આન્સર સરખો આવશે. And so they called this half chord of double the arc the sine, and by relation, this amount here was the cosine. So it's a very geometrically neat orientation to look at the problem. Yeah. So Nityananda, our friend Nityananda, tells us exactly why it was useful, and it's not often in these texts that authors are so explicit about the connection to the origins of why. So we've got this lovely verse that Nityananda says, this is because, he says, in astronomical models, the position of the planet lying at the tip of the half chord, situated perpendicular to the central line, is computed using this measure. So you can see how we go from this abstract idea of half the chord of double the arc to being right away to be able to measure the displacement of a mean planet from the true one to be able to compute a true planetary position. So you can see, you could pick this up and put this here and see right away why signs are so crucial to astronomy. Yeah. Do you think? Yeah. Okay. So, what? Okay. Yeah. Okay. I'll keep going. Okay. All right. So, not only did the Sanskrit scientists come up with this ingenious way of envisaging the sign, but they introduced the terminology, which I'm going to show you, is linked to the terms that we use today in a beautiful translation manner over several cultures. But when Indian scientists looked at this diagram or looked at their planetary models, they saw another beautiful analogy, not just the one of the fabric and the warp of the weft. આપણે જે આ જે એંગલ્સની સાઇડ્સ ને બધું જોઈએ છે એ આ જે ડાયાગ્રામ ઉપરથી આપણે એંગલ સાઇડને જોઈએ છે એ તમને દેખાતું હશે કે એક તીર કમંડળની જેવું દેખાય છે. જેમ કે ચાપ, સંસ્કૃત વર્ડ ચાપ છે એનું આમાં લખ્યું છે બો, અને એ આર્ક જેવું દેખાય છે. જે આપણે કરીએ પેલું તીર મારીએ તો એનો જે બો હોય એના જેવું દેખાય છે. પછી જ્યા એટલે કે બો સ્ટ્રિંગ એટલે જે સ્ટ્રિંગ હોય છે વચ્ચેની જેના ઉપરથી આપણે તીર ફેંકીએ છીએ એ દેખાય છે. હાફ ધ બો સ્ટ્રિંગ એટલે એ સાઇન એંગલ છે. પહેલાં જે એનોલોજી હતી એ ફેબ્રિકવાળી હતી, જે ક્રિસ ક્રોસ જે હતું એ, અને હવે જે નવી એનોલોજી આપણે જોઈએ એ તીર કમંડળવાળી છે, જે સાઇનની સાથે આપણે રિલેટ કરીએ છીએ કે જે બો હોય પેલું જેનાથી આપણે નિશાન તાકીએ એ જે સાઇડ છે આર્ક છે, જે ડિસ્ટન્સ છે એની થ્રેડ છે જેનાથી આપણે વિંધીએ છીએ એ કોર્ડ છે. And so when the astronomers looked at this abstract diagram, they saw bows and arrows, for which we see all over the place in Indian literature. So if you imagine, you can see a bow and arrow in this diagram. You just remember Rama with his bows and arrows drawn to have some of those amazing, incredible cosmic fights that he did. You can see straight away that there's a bow and an arrow in this diagram. And that is probably the inspiration behind the technical terminology.
Chapa in Sanskrit literally means bow. Okay, so you can see how we've got that. But mathematically speaking, in a mathematical context, it means arc. Jia means a bowstring, so it can be used in the context of weapons as a bowstring, but in a mathematical context, it was co-opted to mean cord. All right, so this bowstring, you can see that there. Half the bowstring, a compound between jia and arda, half the bowstring, this is the half the chord of double the arc, and shara, the arrow or the verse sign. Who has heard of the verse sign ever? Has anybody heard of it before? Not at all. The verse sign was an alternative. It literally means arrow. But the verse sign is this tiny little bit here, which is related to the cosine, but they decided to use this amount instead. It's simply the radius of the circle minus the cosine. The verse sign was used up until quite recently in the last 50 to 100 years, particularly by navigators. So you can look it up. There's a new trigonometric function that nobody's heard of, but it first was emerged in Sanskrit. So, fascinatingly, is that okay, or do you need to? Yeah, keep going. Fascinatingly enough, there is a connection between the Sanskrit word jya and the modern word sign. Unbelievable, but true. So jya, or a synonym for jya, jiva, was used for bowstring, or to mean the sign. Once the tradition of trigonometry was well established in Sanskrit sources, these texts were transmitted across the world, including to Arabic sources. And the Arabic scholars looked at the word jiva and they said, we do not have this concept in our language yet. So what we're going to do is transliterate it. That means letter by letter, we'll take the technical word and create a new word, a neologism. And so they took the Arabic letters. They don't have, so they took J, J, this long I, E, they had this diphthong I here, and V and B in Semitic languages are very similar, and so they put jibe at the end. So it became Arabic al-jibe to represent the sign. Now, funnily enough, al-jibe is already a word in Arabic, and it means a geographical bay, or a pocket, or a fold, or a cavity, or, some sort of depression or a hole. So it's got this double meaning. It means this technical term for the sign, but it also means a hole or a fold or a pocket. Now, when Latin-speaking scholars came to learn of Arabic texts and said, what is this amazing trigonometry technology? We want some of that. But of course, they had to translate it from Arabic into Latin. They talked to their Arabic-speaking colleagues and they said, tell us more about this word al-jibe. And the Arabic scholars said, well, it means a bay, a fold, a pocket, a cavity. And the Latin scholars says, we have a word that means bay, cavity, fold. It's sinus, just like your sinuses here. And you can see, so from a transliteration from jiva to jibe, but a translation from jibe to sinus, we get the modern day word for sign. Do you think you can do that? आप एक बार बता दीजिए. Yeah. You think it's okay? Yeah. Okay. Maybe you can just go into some examples now. Or are you going to talk through it? Did you understand? Yeah. Okay. Okay. Yeah. Yeah, this अभी ये बता रही थी कि ये पहले हमें जानना चाहिए, ज्या आप तो सभी सुने होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे.
वो ज्या का कई मतलब होती है। ज्या का मतलब पृथ्वी भी होती है, ज्या का मतलब स्ट्रिंग भी होती है। हम इस चित्र को देखेंगे तो ये जो स्ट्रिंग है BC, वो स्ट्रिंग होगी हम ज्या बताते हैं, ठीक है। वो धनुष होती है, उसमें एक स्ट्रिंग बांध देते हैं, उसको हम ज्या कहते हैं, ठीक है। इसको ज्या बोलते हैं। तो ये जो अर्ध ज्या है उसको ही हम साइन बताते हैं। वो एक कार्ड निकालते हैं। ये भी बता रही थी कि ग्रीक में वो कार्ड से ही काम चलता था, हमारे यहाँ कार्ड को हम छोड़ दिए, ठीक है। हम तो इसको ही लेते थे। इसका कारण यह है कि हमें ये जो कैलकुलेशन होती है प्लानिटरी पोजीशंस का, उसमें हमें साइन की ही चाहिए। तो कार्ड निकाल के फिर उसको आधा करके काम करने से उतना सुविधा नहीं है, इसलिए हमारे भारतीयों ने ज्या को ही लिया, ठीक है, और ज्यार्ध को ही लिए थे। ये पहले बता के ये जो स्टोरी जो बताती थी, वो जीवा जो है, जीवा वो ट्रांसलिटरेशन का मतलब, वो ये जीवा शब्द को वो अरबिक में जो लिखते थे वो अलजेब लिखते थे, ठीक है, अलजेब लिखते थे। वो जो ट्रांसलिटरेशन है उसका जो शब्द का जो मतलब है वो है ये फोल्ड कैविटी करके है, जेब। हाँ, आज भी है, जेब में डाल दो ठीक है। तो वैसा ही होता है वो जेब, वो जो शब्द है, तो यही जानना चाहिए आपको। ये जेब जो है वो ट्रांसलिटरेशन है, उसका मतलब तो यही है, पॉकेट कैविटी करके। तो उसको फिर लैटिन में साइनस बोलते हैं, और साइनस से साइन बदल गया, ठीक है। यही स्टोरी है, कहानी यही है बस। तो आगे, हाँ, ये देखिए ये कितना पुराना है, ये ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी कितना पुराना है। सो हियर यू जस्ट सी ए वराह मिहिरा करके आप सुने होंगे, वराह मिहिरा। उनका क्या किताब है? एक तो किताब मालूम है, वराह मिहिरा ने जो लिखा, नहीं सुने हैं? ये ज्योतिष जो देखते हैं, कई लोग को ज्योतिष में विश्वास होती है, तो ज्योतिष को जो देखते हैं उसके लिए जातक वो जो बोलते हैं वो सब पहले उन्होंने ही किया। इसका जो टाइम है 6th सेंचुरी है। आर्यभट्ट थे 5वीं शताब्दी के अंत में, उसका थोड़ा से आगे काल में वराह मिहिर इधर थे, और इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसका नाम है बृहत संहिता। बृहत संहिता, उसमें कई चीज पड़े हुए हैं, ओके। वो बृहत संहिता एक बड़ा है, और इन्होंने पंच सिद्धांतिका करके एक किताबें लिखी हैं। ये पंच का मतलब 5, सिद्धांतिका का मतलब सिद्धांतों का संग्रह। ये जो किताब है इसमें 5 सिद्धांत उसके समय में जो थे उनको लेके इन्होंने संग्रह करके इस किताब में हमें दिए हैं, ठीक है। तो 5 सिद्धांत पहले ही थे, तो इस किताब में हमें जो मिलता है वो उसके पहले ही हमारे संप्रदाय में थी। तो उनका संग्रह इस किताब में मिलता है। वहाँ क्या है साइन के बारे में ये थोड़ा आप अभी देखेंगे। तो उसी पंच सिद्धांतिका में साइन 30 आज जो बोलते हैं, तो आर का मतलब रेडियस, ठीक है। साइन 90 रेडियस हो जाएगा ना, तो साइन 30 हाफ बोलते हैं, तो रेडियस का मेशर में r/2 होगा, वो है उधर। और साइन 45 जो होती है 1/√2, और साइन 60 √3/2, साइन 90 r हो गया। ये सब उधर उस किताब में है। और इसका चित्र के रूप में हम ऐसा देख सकते हैं। हाँ, इधर आइए, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने किताब में साइन 90 को 120 का वैल्यू देके किए हैं। आज साइन 90 क्या होती है? 1 होता है, इसलिए ही साइन 30 हाफ होती है। तो वो जो भी लेके हम काम कर सकते हैं, वो 120 भी ले सकते हैं, 1200 भी ले सकते हैं, 150 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं। ये जो मेशर है उसके मेशर में हमें साइन 30 हाफ होना चाहिए, साइन 45/√2 होना चाहिए। इन्होंने 120 करके अपना टेबल बनाए हैं, देखिए। तो वराह मिहिरा का जो किताब में r = 120 लेके ये पूरा टेबल उन्होंने बनाया है, ठीक है। ये आगे ये कैसा श्लोक में है देखिए,
शेषज्या स्वरतिथयः गुणशिवधृतिभिश्च विंशतिसहिता पंचनरकं शतार्थं त्रिसमेतं षष्टिरिति लिप्ता। ठीक है, यही पूरा साइन टेबल देखिए ये कैसा आता है। स्वरतिथयः, कितने स्वर होते हैं संस्कृत में? सागरिगमा कितना है? 7 स्वर है। तिथि 15। ठीक है, इधर देखिए स्वरतिथयः, इधर देखिए नीचे स्वर का 7 हो गया। उसके आगे नंबर 2 में देखिए तिथि आ गया 15। ठीक है, स्वर तिथयः। फिर देखिए गुण शिव धृतिभिश्च विंशति। विंशति मतलब पता है क्या है विंशति? 20। वेरी गुड, विंशति इज 20। नाउ विंशति को इनसे जोड़ना है। गुणा कितने गुण होते हैं? सत्व, रजस, तमस। सो गुण का मतलब 3 संख्या। तिथि का 15 हो गया, स्वर का 7 हो गया, और शिवा एकादश रुद्र बोलते हैं। ठीक है, तो शिव का एकादश संख्या है। और धृति, धृति इज अ काइंड ऑफ मेट्रिकल मीटर। ओके, उसके बारे में ज़्यादा नहीं, अभी सिर्फ मान लीजिए वो 18 है। इधर देखिए 20 को इनसे जोड़ना है। 20 + 3 23 आ गया, और 20 + 11 31 आ गया, और 20 + 18 38 आ गया। ठीक है, दिस इज अ वेरी शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एंटायर टेबल। एक श्लोक में फर्स्ट व्हाट ही गिव्स इज द मिनट्स। तो मिनट्स होता है, उसके सेकंड्स भी होते हैं, तो उसको कंडेंस करके इतना अच्छा बता दिया। सी विंशति 23 बताने के लिए त्रयोविंशति बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर 31 बताने के लिए 31 बताना पड़ेगा। इन्होंने वो सबको उतना छोटा करने के लिए 20 से इतना जोड़ दीजिए, ऐसा करके। सो दिस इज हाउ ही हैज डेवलप्ड द एंटायर टेबल। देखिए पंचनरकम शतार्थम त्रिसमेतम। सो ऑल द numbers you see, shatartham trisametam means 50 + 3. So these are all pancha naraka. Pancha is pancha, naraka means there are 4 types of naraka which are described. So ये सब हो गया। षष्टिश्च लिप्ता। लिप्ता means minutes. So having listed the values of the minutes, then he will go to the next verse and then he will list the values of the seconds. Okay, so this is the model that has been adopted by him to present the values of the signs in a short form. ये वराहमिहिर का है। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा समय इसमें नहीं ले लूँगा। तो सिर्फ इतना बताना चाहता था कि सो बाई द टाइम ऑफ वराहमिहिरा देयर वेर मेनी सिद्धांतास। उनको संग्रह करके पंच सिद्धांतिका में उन्होंने उसमें जो है एस्ट्रोनॉमी है, मैथमेटिक्स है, वो सब डाल दिया है। तो उसमें साइन का मेंशन ऐसा किया गया है 2 श्लोक में। ठीक है, 2 और भी थोड़ा है, तो ये अब 30 डिग्री तक ये वैल्यू है। ठीक है, want to do quickly something? Okay. Yes. So what we are doing is looking at various authors and how they computed the signs and how they are different. So we've looked at Varamahira. Now we'll look at another work called Pitamaha Siddhanta, which was early 5th century, although the dating is a little bit insecure there. So again, we don't have the Sanskrit here, but there's a verse that defines not numbers like Varamahira, but a recursive algorithm to compute signs. And it's very clever. So I'll just read a bit. The first sign is a 96th part of 21,600. All right, so there's a bit of data. There's the only bit of data you'll get. So that starts you off for your recursive algorithm. If one divides the first sign by the first sign and subtracts the quotient from the first sign, one obtains the difference of the second sign. And then it keeps going recursively. So let's just go through this carefully and see exactly what this algorithm entails. So the first sign, because with a recursion algorithm we need to start somewhere. The first sign
is a 96th part of 21,600. Now, what do we mean by the first sign here? Well, the author of the Paitamaha Siddhanta remains silent, but we know from the computations that what he means by the first sign is an angle of 3 degrees and 45 minutes, because that's a 24th part of the entire quadrant. So he's saying, for this arc, what is this line segment? And he's saying it's 21,600 divided by 96, or 225 minutes. So that line segment for the sine of 3 degrees 3 3/4 is 225 minutes. There's your first value. So what about the second one? So let's read this carefully. If one divides the first sign by the first sign, so here we go, the first sign by the first sign, and subtracts the quotient, in fact, let's just go down to this, and subtracts the quotient from the first sign, one obtains the difference of the second sign. Now, you've got a New Zealander speaking it in English of a translation of a Sanskrit text which just says first sign, second sign, second sign. It's quite very succinctly expressed, which is quite the genius of the author, but it takes some processing to be able to understand exactly what the algorithm entails. So the difference of the first sign with the first sign, so that's 225 over 225, which is 1, and subtracts the quotient from the first sign, so 225 minus this 1. One obtains the difference of the second sign. So what they mean there is the difference of the second sign is the difference between the second sign and the first sign. The sum of the first sign and the difference of the second sign is the second sign. And so in other words, they're doing just a little bit of algebra there to get the second sign, that it's 225 minus 1 plus 225 gives you 449. So there is your second sign, or the sign of the arc of double this amount. So this line segment here. So this will be 730. Ma'am? Yeah. This formula can also be reduced to sin I is equal to 2 sin I minus 2 times sin I minus 1 minus 1. Correct. So it can be abbreviated a little bit more, yeah. And so you just keep going on and on. And he keeps going and gives you another recursive step. If one divides the second sign by the first sign, so here we have this here, and subtracts the quotient from the difference of the second sign, one obtains the difference of the third sign, etc., etc. And so you get this general recursive algorithm that I showed on that first sign. So it's very, very clever recursive definition of generating these signs. Very early, so we're talking perhaps 5th century, the middle of the first millennium. And so what you can do is just keep going and producing these signs. So the third sign will be 671, the next one will be as it is. And if you continue to get the 24th sign, which is the sign of 90 degrees, or the radius, as Professor Ram said, you'll actually get 3,359. Probably it was more, because there's a little bit of approximation going on there, the radius value was meant to be 3,438, which we'll talk about, a very useful number and one that crops up in many authors because it's the earliest equivalent type relationship we have to the modern day radian measure. So 3,438 is about equal to taking the circumference over 2 pi, which means you can use the same units to measure the arc and the corresponding line segment. So that explains that particular number there. So look out throughout all the different authors for who is using this particular number, 3,438, to be their radius. It also gives you good integer precision for your sign values when you compute them. Unlike Varamahira, who had r equals 120, which he needed to give in minutes and seconds and so forth.
Right, on to Aryabhata. So the Paitamaha Siddhanta was really a precursor to Aryabhata. Yes. Okay. મેમ એવું કહે છે કે જે પાયટામા મહાસિદ્ધાંત જે છે એમાં જે મેથેમેટિશિયન છે એ બહુ ક્લેવર છે. એ એક સાઇન 1ની વેલ્યુ આપને ખબર હોય તો રિકર્સિવલી એનું એક ફોર્મ્યુલા આપ્યું કે સાઇન આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 સાઇન આઈ -1 એકની વેલ્યુ ખબર હોય તો એના પછીની બધી વેલ્યુઝ આપણને ખબર પડી જાય. અને એમ કરતાં કરતાં જ્યારે આપણે સાઇન 24 ઉપર જઈએ છીએ ત્યારે જે આર રેડિયસ મળે છે એ એની વેલ્યુ 3 આઈ થિંક 3438 છે, વિચ ઇઝ નથિંગ બટ c/2π, વેર c ઇઝ ધ આર્ક, જે આખું જે આર્ક છે એ છે. Okay. So this the important thing तो जो आपको समझना है वो ये चीज़ है, ये पैतामह सिद्धांत वो कब किसने बनाया हमें पता नहीं, परंतु वो पैतामह सिद्धांत में if you want to talk, I think you should please leave the hall. Some decorum has to be maintained. So ये this साइन टेबल जो बनाए हैं तो उसका एक रिकर्सिव अल्गोरिथम है, वो पैतामह सिद्धांत में ही मिलता है, तो यही इन्होंने बताई थी. परंतु वहाँ जो रिकर्सिव अल्गोरिथम है उससे हम कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा फर्क आता है, 3359 करके एक वैल्यू आता है. ये जो है सर्कमफ्रेंस बाई 2π, ये सर्कमफ्रेंस जो होती है सर्कल का, ये 360 डिग्री हम सब मान लेते हैं. क्यों 360 मान लिया हमने? उसको 120 ले सकते थे, 500 भी ले सकते थे. ये भी एक प्रश्न है. तो ये इसलिए हमने मान लिया कि तो पहले बहुत साल, हजारों साल पहले, तो हम एक साल में कितना दिन वो उतना ठीक नहीं बता पाएंगे. तो लगभग 360 होती है, समझ लिया. एक दिन में सूरज एक डिग्री चलता है, ऐसा करके फिर सूरज उधर ही आ जाता है. ठीक है, आसमान में देखेंगे तो ऐसा मान के शायद 360 हम सब ने ले लिया. ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है. तो 360 ले लिया, मान लीजिए 360 ले लिया, वो 360 को फिर हर एक डिग्री को 60 करते हैं, तो उससे क्या निकलता है, 360 × 60 21600 मिल जाता है. तो वो 21600 को वो पाई का जो वैल्यू है उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें आता है 3438. तो इनका जो रिकर्सिव रिलेशन है उसमें थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, तो उसमें अप्रॉक्सीमेशंस हो जाते हैं. इसलिए वो सबको ठीक कर दिया आर्यभट्टा ने. तो हम आर्यभट्टा के बारे में थोड़ा अभी जान लेंगे. कल ही मैंने सुना वो पाई ने थोड़ा आर्यभट्टा के बारे में बताया, मैं थोड़ा ये वर्ष भी आप सुने होंगे कल. तो देखिए आर्यभट्टा का जो टेबल होता है तो ऐसा होता है, वो 225 से शुरू होके 90 डिग्रीज 3438 हो जाता है. ठीक है, वो 21600 को लेके हमने 2π से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी दी वैल्यू दैट वी विल गेट. और जो वैल्यूज है 225 इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 225, 224, 222 एंड सो ऑन सो फोर्थ 7 तक आ जाता है. ठीक है, ये जो डिफरेंस साइन वैल्यूज का डिफरेंस वो गढ़ते गढ़ते चलेगा ना, तो लास्ट में जाके 0 ही हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी यूजुअली से. सी व्हेन यू फाइंड द d/dx ऑफ sin x, so it will become 0 at that point, rate of change जो होता है. ओके, नाउ इसको आर्यभट्टा ने कैसा किया ये हमें जानना चाहिए. दिस इज वेरी सिंपल, आप सब ये नाइसली बता सकते हैं स्टूडेंट्स को. एक वर्ष है आर्यभट्टीय में, समवृत्त परिधिपादम छिन्द्यात्
vritta circle. Samavritta means exactly drawn circle. See, a circle drawn on a flat surface. So circle, so if it is on a surface which is not flat, it is not circle anymore, right? Number one. And if the radius is not exact, then also it is not a circle. So samavritta means, so yes, perfect circle, okay? Paridhi means circumference, जान लिया? समवृत्त का जो परिधि होती है उसका पादा मीन्स 1/4, ठीक है? समवृत्त परिधि पादम 1/4 of a circle. छिन्द्यात मीन्स यू मे हैव टू डिवाइड, ठीक है? उसको त्रिभुजात चतुर्भुजात चैव. So you just consider 1/4. So we have this OAG horizontally, OCD vertically. So that region you have to consider. उसको ये बताते हैं त्रिभुजा. त्रिभुजा का मतलब ट्रायंगल. चतुर्भुजा is in general quadrilateral. Here you have to take it as rectangle, ठीक है? चतुर्भुजा can be any type. So here he is saying you divide this quadrant into triangles and rectangles. So ऐसा मान लीजिए. So this is what he is saying. So now it becomes very easy for us. Okay. So this is what we are going to tell you. So this can be very nicely, beautifully taught to children. So you don't need to do anything. ये तो हमें पहचान होता है. See, if you divide, so in fact this is nicely described later also in certain other works. So here Aryabhata always says in a very short form. ये बहुत एक ही पद में ज़्यादा चीज़ इसको जोड़ के ये बता देते हैं संग्रह में. तो ये इतना ही बता था. तो इसको एक क्वाड्रेंट लीजिए और उसको ट्रायंगल और चतुर्भुज और त्रिभुज से उसको कर दीजिए और उससे हब निकल जाएगा, ऐसा बोलता है. कैसा निकलेगा? सी, इसको देखिए, ये इक्विलेटरल होगा. जो रेडियस लेते हैं, सुनिए, इज वेरी सिंपल. हम तो रेडियस तो सर्कल तो बनाया, रेडियस तो मालूम है. ये पॉइंट जी को ले, ये जो रेडियस है उसको लेके दूसरा पॉइंट कर दो, बी आ गया. उसको लेके दूसरा पॉइंट कर दो, ये 6 बन जाएगा. बस सिंपल. नाउ ये जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. अभी देखिए, इधर देखिए, ये ऊपर ये sin 30 निकल गया r/2, ठीक है? सो ज्योमेट्रिकली यू कैन शो दैट sin 30 इज r/2. ये हो गया. सिमिलरली sin 45 कैन ऑल्सो बी इजीली डिटरमिन्ड. अभी r को बताया 3438, तो r/2 होगा 1719. और दूसरा चीज़ हमें जानना चाहिए, एक वैल्यू निकाल दिया तो उससे उसका जो आधा होता है वो बहुत आसान निकाल सकते हैं. अभी वो क्लेमेंसी बता रही थी, तो वर्स साइन बोलते थे. सिर्फ इधर एक इतना ही समझना चाहिए आपको. ये तो निकल गया अभी BC जो होता है वो r/2 होगा. sin 30 हो गया. अभी sin 15 निकालना है. तो किस जो एंगल मिला गया उसका आधा करना है, तो उसके लिए हम कैसा कर सकते हैं? ये बहुत आसान है. इधर देखिए, इस चित्र में BC पता है, रेडियस तो पता है, तो हमें ये OC आएगा कि नहीं? हो गया, वो कोसाइन मिल गया. अभी देखिए, BC पता है, OC पता है, रेडियस भी पता है, सो CD अपने आप आ जाएगा. हो गया. अभी हमें क्या पता है? CD पता है, BC भी पता है, तो हम BD सेगमेंट निकाल सकते हैं कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम बहुत हो गया. अभी BD मिल गया, तो BD को आधा करो, क्या होगा? sin 15 θ/2. समझा? वेरी सिंपल, ठीक है? तो ये पूरा कर सकते हैं. तो 30 से निकाल के 30 का आधा मिल जाएगा, 15 मिलेगा. वो फिर उसको ले लो, उसका आधा मिल जाएगा, 7.5 डिग्रीज का मिलेगा. उसका आधा मिल जाएगा, 3 डिग्री 45 मिनट्स. तो ऐसा आधा आधा करके हम कर सकते हैं.
एक चीज हो गया। और दूसरा हो गया, तो ये जो साइन होता है साइन थीटा, तो उससे साइन 90 माइनस थीटा भी मिल जाता है। वो कास थीटा जो है वो 90 माइनस थीटा है। तो जो चीज़ मिलते हैं थीटा साइन थीटा पता है तो साइन थीटा बाई 2 पता है, साइन 90 माइनस थीटा भी पता है, बस पूरा टेबल निकल जाएगा। समझा? सो दैट इज ऑल इट इज। सिंपल ज्योमेट्री से शुरू करके और कुछ नहीं चाहिए। साइन टेबल निकालने के लिए सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम जानना चाहिए और कैसा स्क्वायर करना जानना चाहिए, स्क्वायर रूट कैसा निकालना जानना चाहिए, बस इतना 3 ही चीज़ है। तो ये जानते हैं तो साइन टेबल अपने आप निकल जाता है। तो ऐसा ही आर्यभट्ट ने किया है, एक तरीका। ओके, दिस इज वन मेथड, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल अप्रोच। ठीक है, सो ज्योमेट्रिकल अप्रोच एक ही श्लोक में हमें बता दिया, सिर्फ ट्रायंगल और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब यही है, देखिए तो इधर तो ओ सी जो है ओ सी बी ए, वो एक रेक्टेंगल हो गया बस। तो ऐसा हाँ, अपोजिट साइड को इक्वल करने से ज़्यादा उसका फर्क नहीं पड़ता। पार्डन? अपोजिट साइड को कंपेयर करने के लिए उसी की रेक्टेंगल की जरूरत पड़ती है ना इसमें, तो बाकी तो उसका कोई बाकी कुछ नहीं। तो ये हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो सो देयर आर सिंपल वेज ऑफ सीइंग एट थिंग्स। नो नो, ये इसलिए देखिए ये जो है अभी 30 मिल गया तो हमें 60 भी मिल गया, इसको दिखाने के लिए हमें ये भी चाहिए। ठीक है, वो रेक्टेंगल हो गया। तो हमें और दिखाना है तो इधर क्या करना है, इधर से एक डालना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए वो त्रिभुजात चतुर्भुजात चैव ऐसा बताता है। ठीक है, फॉर यू टू जस्ट सी, इसलिए। और देखिए लास्ट जो शब्द है इसमें यथेष्टानि। यथेष्टानि का मतलब क्या है, जितना चाहिए उतना कर लो। ठीक है, तो आधा आधा करके करके ले सकते हो, परंतु बहुत कम करने से फायदा भी नहीं है। साइन थीटा इज सेम एज थीटा व्हेन इट इज टू स्मॉल। ठीक है, बस हो गया। ये इतना ही आपको समझना चाह। मैं यहाँ इधर एक टेबल दिखाया हूँ, देखिए। तो एक तो एट्थ साइन का मतलब साइन 30। तो इन्होंने बताया ना 3 डिग्री 45 मिनट्स, उसको 8 से करेगा तो साइन 30 हो जाता है। सो साइन 30 से कुछ निकल जाते हैं। ठीक है, और साइन 45 जो है वो भी 1/√2 अपने आप डायग्राम से मिल जाता है। ठीक है, इन दोनों को लेना है। फिर इधर देखिए, अभी 8 पता है तो 4 पता है, आधा थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा 16 पता है। अभी 4 मिल गया, उसका आधा 2 मिल जाएगा, वो 24 से सब्ट्रैक्ट कर दो 20 मिल जाएगा। ऐसा ट्री बताओ, हो गया, तुम्हें सब 24 साइन मिल जाता है। क्या चाहिए, साइन 90 का वैल्यू चाहिए, वो रेडियस हो गया, साइन 30, साइन 45, वो तीनों हम ज्योमेट्री से मिल जाता है। फिर ऐसा कम जो हो गया टेबल। वेरी गुड। अभी दूसरा एक चीज़ है, इससे भी वो बहुत बढ़िया चीज़ है, ये ब्रिलियंट। दिस इज कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकर्सिव रिलेशन। ठीक है, आज सुबह तन्या इधर बात कर रही थी, वो कई फील्ड्स मेडल बात कर रही थी। तो एक फील्ड्स मेडल वाला है, उसका नाम है डेविड मम्फोर्ड। ठीक है, सो डेविड मम्फोर्ड, उन्होंने कभी इंडियन मैथमेटिक्स हिस्ट्री सीखने के लिए भारत में आके बैठा। ठीक है, वो मैं इधर आऊँगा बोलेगा तो हमें समय देना ही पड़ेगा। ठीक तो वो इसको समझने की प्रयास की उन्होंने, तब हम सब जाके लेक्चर भी दे रहे थे। एक बार मैंने आर्यभट्ट के लेक्चर दे रहा था, तो इसको ही उनको दिखाया, उनका उतना खुशी हो गई, वो सीट से उठ के हाँ इतना अच्छा किया है। सो ऐसा एक्सप्रेशन उनसे मुख से निकाला। ठीक है, अपने आप। सो ही वाज सेइंग, सी दिस रिकर्सिव रिलेशन, see there are some very bright minds I can see here in the morning discussion. Also various questions were there. Not everybody will be interested in everything, but you have to maintain silence. Okay, now देखिए, so this Mumford,
So he was describing, यहाँ जो इक्वेशन देख रहे हैं डेल्टा आई प्लस वन माइनस डेल्टा आई इज इक्वल टू जे बाई जे वन, यही क्लेमेंसी दिखा रही थी, ये दूसरा कुछ तरीका से, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये डेल्टा क्या है इस डायग्राम में देखिए, सी दिस पी नॉट पी वन, पी वन पी टू, पी टू पी थ्री और आर्क्स, ठीक है। यू डिवाइड दैट इंटू 24, 1 quarter is divided into 24, right? Now from the PI's you drop a perpendicular, ठीक है, वहाँ से नीचे जो डालते हैं वही साइन होती है, ठीक है। PI NI, P1 N1, P2 N2, P3 N3, they are all साइन वैल्यूज, वही ज्या होती है, ठीक है। Now the difference, so this delta is basically P1 N1, P2 N2, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा वन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव साइंस, ठीक है, इसको डेल्टा बोलते हैं। नाउ द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस, डेल्टा आई प्लस वन माइनस डेल्टा आई बेसिकली मीन्स इट इज प्रोपोर्शनल टू जे आई। जे आई मीन्स the sign of the value at that ith point, ठीक है। This is a beautiful recurrence relation which is satisfied, which is what is in the Paitamaha Siddhanta, okay। So this recursive relation, so delta I plus 1 minus delta I, so this he called it as the differential form of the harmonic equation. See, harmonic equation in the difference form, okay, so instead of the continuous form. Okay, so this is all that was stated by him, and there is a nice proof of this. So do we give a break or what is the idea? When should we give a break? Not now. Okay, wait. All of you should carefully see. This is a very beautiful recursive relation. इतना समझ लीजिए, तो पहले बार सुनने से सब मन में आता है ऐसा नहीं है, फिर भी हमें ध्यान से सुनना चाहिए। वेरी सिंपल, दिस रिलेशन सीम्स टू बी ए फैंटास्टिक रिलेशन। सो दुनिया में किसी को भी ऐसा नहीं पता था, जब डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंस का कुछ भी मतलब नहीं था, तो हज़ारों साल पहले इन्होंने ऐसा एक निकाला है, ये और किसी ट्रेडिशन में भी नहीं है। इसको आर्यभट्ट ने कैसा किया होगा, ठीक है। तो पहले तो ज्योमेट्री के बारे में मैंने बताया, ये जो डिफरेंस इक्वेशन है इसको इन्होंने कैसा निकाला होगा, वो तो हमें मिलता है, वो कमेंट्रीज में मिलता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स ओनली टू थिंग्स, ए वेरी केयरफुल एनालिसिस ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये और कहीं नहीं मिलेगा, थोड़ा सावधान से देखिए, आसानी से आप समझ सकते हैं। कहाँ? नो नो, सिमिलर ट्रायंगल्स तो कई जगह पर हम यूज करते थे। नहीं, आप साइन को, ये रिकर्सिव रिलेशन फॉर फाइंडिंग साइंस, वो ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को देखने से यह मिल जाता है अपने आप। सी, दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। इधर देखिए, सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज, ये तो डेल्टा आई प्लस वन माइनस डेल्टा आई, ठीक है, इतना ही हमें समझना चाहिए। इसको पकड़ना, इसको ऐसा डायग्राम में डाल दीजिए, ठीक है। हाँ, set of young students are coming here. Okay. Oh, wait. Just carefully see this. What we have to find out is the difference of the difference, right? ये जो difference है, मैं यहाँ दिखाता हूँ। It is very difficult.
This pen is all useless. What to do? Okay. इधर देखिए, so this is one value, this is second value, this is third value and so on, equally spaced. ठीक है? तो हम यह बताना चाहते हैं कि इधर से ऐसा निकलते हैं और इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स ऐसा हमें लेना है। तो ये जो वैल्यू होते हैं इसको हम डेल्टा 1 कहते हैं, इसको हम डेल्टा 2 कहते हैं, इसको डेल्टा 3 कहते हैं, ऐसा जाता है। ये आपको देखने से ही पता चल जाता है, ये जो आर्क लेंथ है वो समान होती है, फिर भी हम जब ऊपर जाते हैं ये डेल्टा कम हो जाता है। ठीक है, द डिफरेंस ये तो कम होते हैं जाता है। ओके, सो हमें अभी क्या करना है? सो इन जनरल इधर डेल्टा आई प्लस 1 इज लेस देन डेल्टा आई, ये है सामान्य में जो i प्लस 1 होती है वो उससे कम होता है। वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, सो हाउ डू आई गेट दैट? सो डेल्टा i माइनस डेल्टा i प्लस 1, यही हमें निकालना है। सो द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर साइन डिफरेंसेस, इसको ही उन्होंने टेबल बना के हमें दे दिया है। 225, 224, कल आप सुने होंगे मक्खी भकी फकी, राइट? तो वही है और दूसरा कुछ नहीं है। ये क्या पकड़ा है? ये पकड़ा है। इसको इन्होंने कैसा पकड़ा यही है, अभी दिखाता हूं, ये आसानी से समझ सकते हैं। इधर देखिए, सो इस डायग्राम में मे बी आई कैन इवन शो दिस बिगर। ठीक है, हाँ इधर देखिए और भी आसान। इधर देखिए, तो ये एक क्वाड्रेंट है, वो एक्स वाई, और इसमें हम 3 पॉइंट निकालते हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, उसको हम ith पॉइंट कहेंगे। तो बी जो पॉइंट है वो i माइनस 1 होगा और सी जो होगा i प्लस 1 होगा। ठीक है, अभी ये डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज सेम, ये तो आर्क लेंथ समान है। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 225 हम ले लेंगे, सिंपल। नाउ ये एक्स जो है, सो ये इधर है एक्स। ठीक है, ये एक्स दिस आर्क लेंथ, वो ith पॉइंट बोल दिया, तो आर्क का वैल्यू क्या होगा? i टाइम्स अल्फा होगा। ठीक है, और सी एक्स क्या होगा? i प्लस 1 होगा। बी एक्स क्या होगा? i माइनस 1 इंटू अल्फा होगा। ठीक है, अल्फा इक्वल डिवीजन। तो द पॉइंट्स u एंड v जो है, तो हम इसको बीच में लेते हैं। ठीक है, ए बी एंड ए सी, इसके बीच में हम उसको ले लेते हैं। सेंट्रल पॉइंट इज इक्वल टू हाफ अल्फा। द पॉइंट्स पी क्यू आर, सी इधर से ए से नीचे डालेंगे, बी से नीचे डालेंगे, सो दिस आर ऑल a lines have to be drawn, and more importantly this line B to C, A to D डालना है, B to E करना है, C to F करना है। ठीक है, from the point you drop a perpendicular in the x-axis। इसको करके इसका परपेंडिकुलर डाल दीजिए, वो है PQR। ठीक है, तो ये जो लाइन डाल दिया BE, AD एंड CF, तो इससे यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर डाल दीजिए, वो BP, UQ एंड AR। ठीक है, ये हो गया। अभी इस डायग्राम से हमें क्या निकालना है? अभी देखिए, AP जो है वो डेल्टा I है। ओके, CR जो है वो डेल्टा I प्लस 1 है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मिल गया हमारा रिलेशन। ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन AP एंड CR
ओके, इसी को ही उन्होंने एक रिकरेंस रिलेशन डाल के हमें दे दिया. उसको कैसा पकड़ा इन्होंने? सी दैट इज ऑल. सी is by simple similar triangles. The overall philosophy should be known. The details can be worked out by you. ठीक है? So this is all. So we have to find out. So there are two similar triangles. See, this is again. इधर देखिए, इसमें similar triangle आप बताइए. APB and APB, हाँ. OUG. Okay, that is anyway. No, that is not actually similar. That will not be similar. CRA and APB will not be similar. But what will be similar is APB and OGU. इसलिए मैंने रेड में डाल दिया. देखिए, APB and OGU. This is a similar triangle. Another similar triangle is CRA and OHV. This is another similar triangle. ठीक है, समझ लिया? ये दोनों similar triangles है. इसको हम ले लेंगे तो हमें मिल गया this CP AP minus CR मिलेगा. This is all. Look at these two similar triangles. Why are they similar? Because all the three are perpendicular to each other. That's it. Okay. This is a very careful observation. Once he did this, so you are going to get an expression for AP minus CR. ठीक है, तो वो मिल जाएगा. So you will have a relation like this, and once you have that, so delta I minus delta I plus 1 is equal to some factor, okay, into the value of the sign at the middle point, Ji. ये मिल जाएगा. This is a very, very beautiful relation. Okay. So here, this is what, in fact, see, d square by dx square of sine function will again be sine function with a constant factor. ठीक है. So this is the continuous version, and this is the discrete version which Aryabhata has given. Okay. So all that is required here is, so careful drawing of the diagram and observing similar triangles, and you have to just, this constant Aryabhata has not given in this version. So Aryabhata basically gives a relation, so which is not exactly this, but this is what I think Pai would have tried to explain yesterday. Okay, how Aryabhata's relation was further improved by later mathematicians. Okay, so this is what is very interesting about Aryabhata's way of finding the sign value. Okay, escape, wait, view, full screen. Okay. So Aryabhata gave, in short, you have some question? Yeah, we are just winding. So I am just winding up in 1 minute. Aryabhata essentially gave two approaches. One is geometrical approach, the other is some nice analytic recursive relation. With that, we will be able to find out the sign values, and this is the final table that you get given by Aryabhata. Makhi, bhaki, phaki, dhaki, nakhi. That's it. You are breaking now. The tables that have been created by Varahamihira and Aryabhata. अभी वराहमिहिरा को इसलिए हमने देखा कि वो बहुत पहले कैसा था, आर्यभट्ट के पहले ही कैसा था, इसलिए हमने देखा, और आर्यभट्ट को तो हमने बहुत सावधान से देखा वो कैसा निकाला करके. अभी उसके बाद उसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो है ब्रह्मगुप्ता. सो ब्रह्मगुप्ता, वो देखिए आर्यभट्ट 5th सेंचुरी में थे, ब्रह्मगुप्ता 6th सेंचुरी में होते. सो इन्होंने, सो पहले किसी ने लिखा, somebody wrote, see, so in the morning, so when she was lecturing Brahmagupta to Nina Gupta, so she gave the period 628. Okay, तो उन्होंने दो किताबें लिखे हैं. एक तो है
ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, दूसरा तो है खंड खाद्य का, ठीक है। वो दोनों एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड वर्क्स है। तो अभी वो खंड खाद्य का में जो है तो उसको लेके साइन टेबल के बारे में वो थोड़ा क्लेमेंसी थोड़ा बताई। Okay. So I'm just going to go back to this verse here, which we did not recite beautifully together, mucky, bucky, pucky, ducky, nucky, because it sounds very bad on your ears and it's not very memorable. But this is a particular encoding called Katapayadi notation. Do you want to explain that really? It's Aryabhata's special notation. And it's a bit like a failed startup in that nobody used it after Aryabhata, so we don't think it caught on very well. But beyond that, Aryabhata's verse, Maki, Baki, Paki, encodes not just the signs, but the sign differences. Does anybody want to hazard a hypothesis as to why this might be the case? Sign differences and not the signs themselves. Yeah, I couldn't hear. To find the instantaneous differentiation, to find the instantaneous velocities. Yeah, it's quite a modern concept, but it's a really nice one. So yeah, differences are more calculus-based. We don't actually have a very good answer to that question, but it may be that you can see as you encode these numbers in verse, if you encode the differences, there are less digits because the differences get smaller and smaller, whereas the signs themselves get larger and larger, and there will be more syllables to have to memorize and encode in a verse. Do you want to explain that? મેમ કહે છે કે જે સાઇનની જે વેલ્યુઝ છે જે સરે દેખાડ્યું હતું, ડેલ્ટા આઈ પ્લસ 1 એ બધી છે, જેમ ડેલ્ટા આઈ પ્લસ 1 છે હંમેશા ડેલ્ટા આઈથી નાનકડું હોય છે, અને એનો જે ડિફરન્સ છે એ આ બધી વેલ્યુઝ છે 2 2 5 2 2 4, અને એ આપણે જોઈએ છીએ કે એ ડિક્રીઝ થતી જાય છે, એટલે કે સાઇન ડિફરન્સીસ ઇન મિનિટ ઓફ આર્ક્સ ડિક્રીઝ થાય છે. Okay. So the reason I emphasize that and the importance of having something short so it's easy to memorize is the case with Brahmagupta's Khandakadyaka. The Khandakadyaka is a Karana text as opposed to a Siddhanta. Siddhantas are huge and big. They're the theoretical texts where all the analytical details are filled in. A Karana is a short text. It's like cliff notes or just the formula sheet. And so it's very short and useful perhaps for students or practitioners who need an answer quickly and don't need all the theoretical backdrop. So everything that we find in the Khandakadyaka has had some ingenious simplification to make it short and easy to use and memorize. And the sign table is no exception. So here is a sign table from the Khandakadyaka. It uses only 6 numbers using the Bhuta Sankhya system to present the signs. This is sometimes translated into English as object numeral, Bhuta Sankhya system. And it goes, so these 6 values, very easy to memorize. Trimshat, Sanavara Sendur, Janatiti Vishaya, Cha. Chapanam, Ardaja Kandani. That's enough. So, right, so, but just a handful of syllables, you have memorized your entire sign table. Trim, shat, sanavara, sendur,
Ganita-yuktibhasha. Done. That's your sign table. So if I can memorize it, you guys can as well. All right, so what does it mean? The object numeral system takes everyday objects or objects that have spiritual, cultural, mythological significance and gives them a number. For instance, we have a song in English, you might know it, 3 blind mice, 3 blind mice. Do you know that one? No. So, if you say the number mouse to somebody in English, they'll say 3, because they'll think of the mice. So this is the same sort of thing. We saw this. If you say the number guna, you think of the number 3. If you say the number gaja, the object gaja, elephant, what number would you think of? 8, exactly. So, trimshat sanavarasendur Ganita-yuktibhasha means, literally, trimshat is just the Sanskrit word for 30. This sa means plus or increased by. So here's even more of a way to reduce it down, okay? Because the first 3 numbers are 30 something. So 30 plus nava, which is 9, rasa, which is 6, or tastes, Indu, which is the moon, that's the number 1. So we get 39, 36, and 31. And then we get Jinna, number of giant saints, 24. Titi, we saw that before, 15. And Vishaya, which is 5. Are the sign differences. Now look again, we've got sign differences and not the actual signs themselves, because of course one reason for why that might be so is the differences get smaller, whereas the signs themselves get larger. So here's the table. You've got your signs, and notice that Brahmagupta doesn't tell you with the table. All he says is Rashyarda. That is half a rashi, and a rashi is a zodiacal sign, or 30 degrees. So the increments of arc are 15 degrees. So 6 values, trimshat, sanava, rasa, indu, jinna, titi, vishayascha. So there are our sign differences, and you can add them all up to get your signs, and you see your radius is not this large number 3,438, but rather a small number which is easy to work with in keeping with the spirit of a karana, 150. So the radius of your circle is 150. So it's only got 6 values, but you can quickly bring it to mind. Trimshat sanavarasendur Ganita-yuktibhasha. If you want to find a sign value, suppose you wanted the sign value of 40, for instance, you need to linearly interpolate between the two. So just use simple linear interpolation, and Brahmagupta gives that right at the end with this verse here. Do you want to talk a little bit about the interpolation? Oh. Should we do that afterwards? Yes, yeah, okay. We'll talk about the interpolation next. Do you need to... You think it's okay? I can explain. Yeah. Ma'am is telling that ma'am બોલે છે કે આપણે સાઇનનો ડિફરન્સ આપણે અગર ખબર હોય ખાલી 6 વેલ્યુનો, એટલે કે 30 + 9, 30 + 6, 30 + 1 અને 24, 15 અને 5. આ જે આટલી વેલ્યુઝ અગર આપણને ખબર હોય તો આપણે સાઇનની વેલ્યુ ગોતી શકીએ છીએ, જેમાં આર્કની ડિફરન્સ આપણે 15 લે છે, 0, 15, 30 એ બધા. સાઇન ડિફરન્સીસ ખબર હોય તો સાઇન કઈ રીતે કાઢશું? એડિશન. 0 + 39, 39, 39 + 36, 75, 36 + 31, 106. એ રીતે સાઇનની વેલ્યુ મળશે. જે સાઇનની આર્ક છે એ 15 ના ડિફરન્સથી હોય છે. Excellent. So if you ever wanted to convert between the two,
you can use your modern sine function and multiply it by 150, and you'll get, sometimes we use a capital letter to indicate this is a specific sine function with a radius. So you know the sine of 30 degrees, if you pressed it on your calculator, is half. You multiply it by 150, and you'll get the 75 here for the sine of 30. So that's a nice way to convert between the two. It's absolutely simple and clear. So, because this is a karana text and it's very concise, the next question we like to ask as historians is, how were these numbers computed? Because Brahmagupta doesn't tell us in the verse, but we see that indeed it's left to some later people who we sometimes call commentators, who will write some details or some notes on the texts to tell them how it's been derived. So you can see here, from a manuscript, we can see that a scribe has written down Trimshat Sanavarasendur Jinatitibhishayashcha here, and written these numbers down in the margin, and actually drawn a numerical table with the differences here and the actual sign values there in Nagari. So the scribe's actually trying to help you understand what's going on by putting them in a graphical table, not just a versified one. So the commentators are incredibly valuable for historians because they can tell us something about how the text was received, understood, and generated. So we're going to look at one of these commentators on Brahmagupta to see how where these numbers came from. Do you want to? Yeah, okay. So Amaraja is one of a famous commentator who wrote a very long commentary on Brahmagupta's Khandakadyaka. So Brahmagupta's work was very concise, so concise it needed pages and pages of text for it to be properly and thoroughly understood. So, for instance, just for the optics of it, you can see here's the verse. This is a printed edition about 100 years ago. Here's the beginning of Amaraja's commentary in the small text. Then he keeps going. This is just 2 lines of Sanskrit, and he keeps going to explain how these were understood, how you can read the verse, and how you can make sense of the numbers. Ma'am, can you go previous slide? Yeah. Previous. Yeah. બ્રહ્મગુપ્તાએ જે લખ્યું છે આ બધું સાઇનનું ને બધા જે વસ્તુઓ જે લખી છે એ બહુ શોર્ટમાં લખી છે. એને એક્સપ્લેન કરવા માટે અમરાજાએ એને બહુ ટાઈમ લાગ્યો અને એણે મેમે એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે એક જ પેરેગ્રાફને સમજાવવા માટે એણે 2 થી 3 પેજમાં એક્સપ્લેન કર્યું છે. જેમ કે આપણે ફર્માસ થિયરમ છે તો એને 1 લાઇનમાં સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું, પણ એનું પ્રૂફ ઘણા બધા મેથેમેટિશિયને બહુ ટાઈમ લાગ્યો તો આ બધું પ્રૂવ કરવા માટે. એવી રીતે બ્રહ્મગુપ્તાએ બહુ શોર્ટમાં કીધું, જેને અમરાજાએ એક્સપ્લેનમાં ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કર્યું છે. Okay, so you can see the commentary is very long. So we'll go through some of the texts because this could be a very good activity to do with students, with your high school students, because it tells you exactly how you compute these signs. So Amaraja looks at the actual practices of construction. So he's describing physical dynamic processes with a compass, a kartaka, to visually demonstrate the process. So the tools that you need, and you can actually get your students to do this if you like, you're going to need a rope, okay, a raju or a guna, a wooden peg, shanku, a flat piece of earth, a compass, karkataka, and to mark the arcs. And we will have a look at exactly how these are used. So, the Sanskrit is there. We don't really have the time to read every single word, but Amaraja starts off, Atravasana. Here is the explanation. Here is the rationale. As to how the first order sign differences get generated.
So on the ground, he says, on the ground, made level using water. Here's the term salila samikritayam avanau. Having inscribed a circle with a compass, okay, so you make a circle with a compass with measure in digits equal to the radius. So in Brahmagupta's case, this would be 150. One should produce the circle marked with the directions. So we've got north, east, south, and west here. And marked with 12 parts. So that's why you need your compass. You can do your hexagon, your 6 parts, and then subdivide each of the 6 sides to get your 12 divisions. So there's some nice geometry there. And then we get the derivations of the sign. So 2 parts of it are a 1/6 of that, i.e. the circumference, okay? So 2 parts of these 12ths are a 1/6, which is absolutely straightforward. Then you draw in your direction lines here and here, and you get a string attached to both tips of this, extending north-south. Should I have this picture? Or east-west, and you split this, all right, the string, and you stretch it out. This string, he says, is necessarily equal to the radius, and that's just the simple, basic geometrical fact that the radius, the side of a hexagon inscribed in a circle, is just the same length as the radius. Half of this string split by the south-north line or split by the east-west line is the sine of one sine, and here's where it gets a little bit complicated in English. This sine is a zodiacal sign or a rashi, which is 30 degrees, like the constellations, your zodiacal constellations. This is the way in which he uses for his measurement. So there's this bit here is the sine of one sine or 30 degrees, because it's half the chord of double the arc, or 60 degrees. This being the case, he said, the sine of 3 sines, which is 3 times 30 or 90, is said to be the whole of it, which of course is the radius. All right, so here you go, you've generated one of your sines, and you've generated another one of your sines, half the radius. So you can write those down in your table. So you can see the order of discovery is different from the order of numerically increasing arc values. So that's basic, simple geometry. Sine of 30 is 150 over 2. What about the sine of 60? So all of this text here is translated from the Sanskrit Amaraja. He says the square of that is 5,625. The square of the radius is 22,500. The difference of the two is 16,875, and then you take the square root. So we've done some simple identities of triangle, and we've used the Pythagorean theorem to be able to produce the sine of 60 degrees, which is equivalent to r squared minus 75 squared, and you take that square root. So here's the next sign that you can add to the table. Shall I just whiz through these quite quickly? Yeah. And you can go on and you can find this verse sign or the arrow. Amaraja continues to find the sign of 15, which we talked through earlier, or 39. There's your Trimshat Sanava. And then you can find the sign of 75 and the sign of 45, again, by the observation that we have here, an isosceles triangle. And then you put them in order, and then you add them all up, and you'll get your sine table. So Amaraja actually does the demonstration and shows you in order how you derive each particular one. So there's your 6 signs, Trimshat Sanavarasendur Ganita-yuktibhasha. You'll be getting good at those. But now the question posed to Brahmagupta, if you've got very few values, you need some very powerful interpolation to get accurate results for non-tabulated values. And Professor Ram's going to talk about the solution that Brahmagupta came up with here. Very good.
ओके, सो वन इंटरेस्टिंग थिंग, एक तो चीज़ आपको दोबारा एक बार जल्दी बता देता हूँ, ये तो आप सब स्कूल में आपको सिखा सकते हैं। देखिए, वेरी वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो आपको जो भी बोर्ड लेना है, एक बोर्ड लीजिए और बच्चों को एक सर्कल बनाने बता दीजिए, हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये 12 डॉट्स करना है एक सर्कल में, फिनिश्ड। सो ईच वन विल बी 30 डिग्रीज, बहुत आसानी से हो जाता है। ये कैसा आसानी से हो जाएगा, बहुत ये तो मैं नहीं बता दूंगा, ये तो बहुत हो जाता है। यही ये बताते हैं। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी द माइन्यूट डिटेल्स आर आल्सो स्टेटेड हियर। सलिल समीकृतायाम अवनौ, सी I know Mana Shah has brought some Sanskrit students. What is Avani? Avani is Prithvi. See, Salila Samikrita means a surface which has been ensured to be flat by water. आजकल भी यही करते हैं, ये लेवल रखते हैं, देखते हैं, ठीक है। वो उन दिनों में ऐसा भी हो सकता है, ये स्पिरिट लेवल नहीं होगा, वो इन्होंने ऐसा किया होगा, तो वो धरती बनाएंगे, थोड़ा क्ले डाल देंगे, उसमें पानी भर दे, हो गया, इसी लेवल हो गया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको उस दिन में ऐसा करते थे, इसलिए वो बताते हैं सलिल समीकृतायाम अवनौ। व्यासार्ध अंगुलि प्रमाण कर्कटकेना, व्यासार्ध अंगुलि प्रमाण, व्यासार्ध का मतलब रेडियस, ओके। एक कर्कटका लेना है, कर्कटका मतलब कॉम्पस, ठीक है, वो कर्कटका कॉम्पस। तो लकड़ी में कुछ किया होगा, उसको लेके टक 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 बनाना, हो गया। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यू सी, once you know this, so the distance between this point and that point is going to be radius, right? Marking there is very simple, you will naturally end up, ठीक है। तो इसलिए ऐसा बताते हैं, ओके। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक विच एवरीबडी कैन बी टॉट इन स्कूल्स। बस इसके बाद ज़्यादा नहीं बताता हूँ, आप अभी जाएंगे। इसको और ज़्यादा सीखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, तो ये बताते हैं, इसको करो, ये सब मार्क कर दो। उसके बाद क्या करना है, ये रे सी नॉर्थ साउथ डालना है। देखो, तस्य षडंशः भागद्वयम, भागद्वयम का मतलब दो पॉइंट लेके होता, वो 1/6 ऑफ दैट। सी देयर विल बी 12 पॉइंट्स, इसको देखेगा तो देन ही सेज, सी तदुभयाग्रसक्तम दक्षिणोत्तरायतम प्रागपरायतं च। दक्षिणोत्तरायतम का मतलब नॉर्थ साउथ, प्रागपरायतम का मतलब ईस्ट वेस्ट, ये दोनों लाइन डाल देना, ठीक है। देन शी वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, सी उसको इधर से निकाल के उधर करो, ये इधर आएगा। So then you will have, you can very easily see by the string measurement itself. See, 2 fold करेगा तो आ जाता है। So you can straight away everybody, every child can understand. Sin 30 is r/2, बस हो गया। Okay, now अभी थोड़ा दिमाग डालना है। देखिए, ये जो वैल्यूज है, इससे we will not be able to get accurately। आर्यभट्ट ने 24 दिया, तो उसको ऐसा ही लेके हम काम कर सकते हैं, बट दिस फर्स्ट ऑर्डर इंटरपोलेशन विल नॉट बी सफिशिएंट विथ 6 वैल्यूज। देयर इज सम एडवांटेज। ये 6 को कंटेस्ट करने में बहुत आसानी हो जाता है, उसमें तकलीफ नहीं है। 24 का थोड़ा तकलीफ हो सकता है, 6 करने में कुछ भी नहीं है। तो वो करेंगे तो थोड़ा एक्यूरेसी में तकलीफ हो सकती है, बीच का पकड़ने में, इसलिए इन्होंने दूसरा तरीका निकाला। ये बहुत होशियार ब्रह्मगुप्ता जो है, ये अमेजिंग किया है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्टर्लिंग्स फार्मूला और सेकेंड ऑर्डर इंटरपोलेशन फार्मूला। ये एक पद्य में है ऐसा, देखिए, गत भोग्य खंडकांतर दल विकलवधात शतैर्नवभिराप्त्या तद्युतिदलं युतोनं भोग्यादुनाधिकं भोग्यम। ये इस मीटर का नाम है आर्या।
गत भोग्य खंडकांतर। इधर देखिए, ये चित्र में मैंने इसलिए दिखाया, अभी आपका मान लीजिए ये सी का ज्या पता है और ये जी का ज्या पता है, बीच बीच में बताता है ना, एक का वैल्यू पता है, दूसरा का वैल्यू पता है, बीच वाला निकालना है तो क्या करना है, इसलिए बताता है ये फार्मूला। सो दिस इज इंटरपोलेशन। और डेल्टा थीटा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा करने के लिए क्या करना है, ओके। गत भोग्य, गता का मतलब ये जो गया है ये सी, भोग्य का मतलब तो जो जी है। So you have a value of theta in between two values. The previous value is called gata, the later value is called bhogya. Okay. So gata bhogya khandaka antara. Antara means you have to find the difference. Okay. Dala vikala vadhat. So dala means half of it. See, ये संस्कृत में कला का मतलब मिनट्स, विकला का मतलब सेकेंड्स, ठीक है। दल विकला, ओके। सो दल विकला वधात। सी, इफ यू कन्वर्ट दिस 15 degrees into, see this 15 minutes into seconds, you have to multiply by 60, correct? You will get 900. वही बताता है शतैर नवभिराप्त्या, शतैहि नवभिहि मीन्स बाई 900 उसको डिवाइड करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू सेकेंड्स, तो विकला का मतलब सेकेंड्स, कला का मतलब मिनट्स। शतैर्नवभिराप्त्या तद्युतिदलं युतोनम, युतोनम, युता मीन्स एडिशन, ऊना मीन्स सब्ट्रैक्शन। So if you choose the greater value, then you may have to subtract. If you choose the previous value, you have to add. इसलिए युतोनम का मतलब you may have to either add or subtract. Okay. So that is how he gives this value, and this is a complicated formula. Hey Babu. So yutonam. So you have to either increase or decrease, and you have to get the value. So you have various examples that has been worked out. This will be available for you, but I want to just tell you that this is a very very important formula. अभी लास्ट लाइन देखिए, तो ये 6 वैल्यूज को लेके वी फाइंड बाय इंटरपोलेशन सम वैल्यू. सो दिस इज वेरी एक्यूरेट. सी 60.96 you get, by modern you will get 61, that's it. Okay. The second order interpolation is a very interesting mathematical technique. इन्होंने ये बताया. अभी मुंजाला want to say, or maybe we can skip this मुंजाला. Okay. We'll just skip. और एक चीज, this is an interesting approximation. ये देखिए, भास्करास महाभास्करिया. ये सुबह से डॉक्टर रमा कल्याणी was talking here. She was saying लीलावती of भास्करा, ठीक है, वो तो 12वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है. ये जो भास्करा है इधर, ये तो 7वीं शताब्दी वाला है. ओके. सो दिस भास्करा हैज रिटन अ कमेंट्री. आर्यभट्टी का एक व्याख्या लिखा है, वो बहुत रमणीय सुंदर व्याख्या है. सो ये अपने आप भी ग्रंथ लिखे हैं. वो उसका नाम है महाभास्करिया, लघु भास्करिया, ऐसा कई किताब लिखे हैं. उसमें अभी देखिए, दिस व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट. इन्होंने क्या किया है, वो साइन वैल्यू हमें निकालना है तो टेबल को कंठस्थ दिमाग में रखना और उससे वैल्यूज ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. वो 225, 224 या जो भी है, उन सबको ऐड करके फिर बीचवा इंटरपोलेशन करके फिर साइन वैल्यू निकालना है. इन्होंने सोचा हम दूसरा कुछ तरीका पकड़ेंगे. लाइक टुडेस वी डोंट डू एनीथिंग, वी जस्ट प्रेस द बटन, राइट. वैसा इन्होंने एक फार्मूला निकाल दिया. वो जो एंगल है उस एंगल को वो इक्वेशन में डाल दो, साइन वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. अंडरस्टैंड. सो आई वांट टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर साइन वेयर आई डोंट यूज द टेबल, आई जस्ट प्लग इन द वैल्यू ऑफ थीटा, आई विल गेट द साइन थीटा.
ठीक है, ऐसा एक एक्सप्रेशन निकाला है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। देखिए यही एक्सप्रेशन है, फॉर वॉट एवर इज द थीटा you get 26 degrees, 48 degrees, 51 degrees, 51.4 degrees, whatever, जो भी थीटा हो, वो थीटा को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, जो वैल्यू आता है वो r sin थीटा है। सो दिस इज ए ब्रिलियंट रैशनल अप्रॉक्सीमेशन फॉर साइन फंक्शन, ठीक है, रैशनल अप्रॉक्सीमेशन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो यू प्लग इन द वैल्यू ऑफ थीटा, you will get, but it requires computation. This is a different kind of computation, okay, but not the interpolation, okay. So this is what he has done. देखिए, this is the verse that he says, मख्यादि रहितं कर्म कथ्यते तत्समासतः चक्रार्धांशक समूहात्, oh, समूहात् should be there is a mistake, विशोध्याः ये भुजांशकाः तच्छेषगुणिताद्विष्ठाः शोध्याः खखेषु खाब्धितः चतुर्थांशेन शेषस्य। सो ये फार्मूला है, ये जो मैं इक्वेशन में डाला हूँ वो श्लोक में है। वो कैसा है थोड़ा समझ सकते हैं आप लोग। देखिए पहले क्या बोलता है, अभी हमने सुना मक्खी भकी फकी, राइट, वो मख्यादि रहितम, रहितम मीन्स डिवाइड ऑफ, बिना, वो मक्खी भकी फकी के बिना हम कैसा साइन वैल्यू निकाल सकते हैं, मैं ऐसा बता देता हूँ। कथ्यते, कथ्यते मीन्स हाँ, इट इज बीइंग सेड, मख्यादि रहितम कर्म, कर्म इज एनीवे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, वो मख्यादि को छोड़ के दूसरा तरीका से हम कर सकते हैं। मख्यादि रहितम कर्म कथ्यते तत् समासतः। सी फुल्ली आई एम गोइंग टू टेल दिस हाउ। चक्रार्धांशक समूहात्, ये बताइए चक्र का मतलब क्या है? व्हील, वो यहाँ 360 डिग्रीज होती है, चक्रा 360, चक्रार्धा हाँ 180, you understand? चक्रार्ध अंशका means 180 degrees, चक्रार्धांशक समूहात्, वो मिस्टेक है, समूहात्। विशोध्याः, विशोध्याः means to be subtracted, ओके, उसको निकालना है। ये भुजांशकाः, वो थीटा मान लीजिए, ओके, जो एंगल करना है, जिस एंगल का साइन निकालना है उसको 180 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई हैव पुट 180 माइनस थीटा। चक्रार्धांशक समूहात् विशोध्याः ये भुजांशकाः तच्छेष गुणिताः। सी गुणिताः मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय दैट, ओके, थीटा इंटू 180 माइनस थीटा, इसको कर दो। इसको दो जगह पर डालना है, द्विष्ठाः का मतलब दो जगह पर रखिए, इट इज़ लाइक स्टोरिंग इन द मेमोरी, उसको फिर हमें निकालना है, राइट। वैसा एक जगह पर डालो, दूसरा जगह पर डाल दो, ओके। नाउ ये लाल वाले में क्या है? खखेषु खाब्धितः, हाँ वो क्या है? वो कैसा? या यू सी द कलर एंड देन यू से दिस फेलो सीज द कलर एंड देन। ये ख का मतलब जीरो, खम का मतलब स्पेस है। संस्कृत में खम का मतलब आकाश, आकाश का मतलब शून्य, ठीक है। सो ख खा मीन्स 0 0। उसके बाद क्या है? इशु, हाँ इशु का मतलब 5, बॉन्ड, बॉन्ड, हाँ 5, क्यों? मनमथा, मनमथा, यू नो द वर्ड मनमथा आप सब सुने हैं ना? मनमथ सुने हैं कि नहीं सुने? उसका पराक्रम तो होता है सबके ऊपर। सो मनमथा, ये मनमथा ये शब्द जो है ये ऐसा निकलता है, मनहा मथनाति,
That fellow churns your mind. Okay? Once you are affected by him, तो अपना दिमाग घूमने लगता है. So manaha mathnati iti manmatha. Okay? Mathnati means churns. Okay, ये मनमथा है. उसको हम पंचबाण कहते हैं. ठीक है? पंच सायका, सायका, बाणा, शरा आर ऑल सेम. ठीक है? वो क्यों पंचबाण कहते हैं? कल बताया? नहीं बताया? हाँ, नहीं बताया. मैं बता देता हूँ आपको. हाँ, तुम्हें पता है? मना, कामा, हाँ, अनदर नेम ऑफ कामदेव, वो तो सही है. ये बताती है, ये देखो. कामदेवा इज इक्वल टू मनमथा इज इक्वल टू पंचशरा. ये बताती है, वो तो है किताबों में, वो क्यों है वही पूछ रहा हूं. ये मनमथ जो है, ये इसका पंचशर कहते हैं. मैं जब गणित सीखने के लिए गया, मैं आप जैसे कई एमएससी के लोग हैं इधर, ठीक है, मैं एमएससी पढ़ के उसके बाद एमएससी फिजिक्स के बाद ही मैंने इसमें घुसा. ठीक है, तो जब मैंने गया तब पहले थोड़ा भूत संख्या के बारे में कुछ पता नहीं मुझे, अपने आप थोड़ा सीखने लगा. तो जब सीखने लगा थोड़ा कुछ तो समझ में आता है. नेत्र बोलेगा तो 2, गुण बोलेगा तो 3, वेद बोलेगा तो 4, ये सब आता है. ये बाण बोलेगा तो 5. मुझे समझ में नहीं आया कैसा. ठीक है, मैंने पूछा, मेरे पिताजी से जाके पूछा, ये बाण को 5 बोलते हैं क्यों? वे बोले, जैसा माना ने बोली, वो पंचशरा करके है. मैं फिर से पूछा, उसको क्यों पंचशरा कहते हैं? मेरे पिताजी ने बोले कि वो जब बाण डालता है, वो एक ही डालेगा, वो 1 से 5 इंद्रियों खत्म हो जाएंगे. ठीक है, वो कामवश जब होता है तब यह भी नहीं सुनाई देगा, यह भी नहीं देखेगा, कुछ नहीं होगा. ठीक है, ये 5 इंद्रिय एक ही साथ खत्म हो जाएगा. ओके, इसलिए उसको पंचशरा बोलते हैं. ठीक है, और मेरे पिताजी और भी जोड़ दिए. उन्होंने बोला कि इसलिए ही 5 स्टार होटल बोलते हैं. ठीक है, तो एक साथ 5 इंद्रिय का तृप्ति होगा. ओके, जो भी हो. अभी आइए इधर. इशु का मतलब शरा, शरा का मतलब 5. इधर देखिए 005 आ गया. उसके बाद अगेन खा 0. अवधि का मतलब ओशन, वो 4. सो 40500 हो गया. सो इससे शोध्याः, शोध्याः का मतलब निकालना है. सी, यू सी. सो नाउ द फार्मूला इज कमिंग. यू कीप इट इन 2 places. इन 1 place यू सब्ट्रैक्ट. किससे निकालना है? इस संख्या से निकालना है. उसके बाद बोलते हैं चतुर्थांशेन. ये चतुर्थांशा, व्हाट डज इट मीन? हाँ, 1/4. Oh, correct. But where is 1/4 coming here? हाँ, वेरी गुड, करेक्ट. ये जो डिनोमिनेटर है उसका चतुर्थांश करना है, तो वो 4 ऊपर जाके बैठेगा. ठीक है, चतुर्थांशेन शेषस्य. शेषा मीन्स रिमाइंडर. ओके, सो ऐसा फार्मूला बनाया हमने. ओके, वेरी गुड. This is a very, very good approximation, amazingly good approximation. See, she has shown the graph, all that she has done. I will very quickly take you through. So this function, you have a beautiful symmetry.
वो देखते हैं। ये तो फंक्शन में ऐसा है ना, देखिए सी 0 to 180 there is absolute symmetry around 90. See, you have 180 minus theta into theta, obviously this function is going to be concave. Okay, ये आएगा. So over the entire range, this is approximation, and this is a very beautiful. So it will be a mathematician's delight to arrive at an expression for sine function that at once captures the properties as well as serves as a very good approximation. Sometimes you may get something which is very beautiful, but it need not be very accurate. You see. So here it is both beautiful and accurate. See, यही nice इसके बारे में. Okay, so this I will leave. This is a Hardy. Okay, देखिए. So this is a very simple proof for this. इन्होंने कैसा निकाला होगा? That is everybody's guess. See, different people have attempted different things, but anything that you attempt, वो हम जो भी तरीके से हम निकालना चाहते हैं वो तरीका उनको पता होना चाहिए उस दिन में. ठीक है. आई कैन नॉट टेक समथिंग मॉडर्न एंड देन गो बैक एंड फिट. सो यहाँ तो उतना आसानी से वो ट्रायंगल के बारे में पता है उनको और अलजेब्रा भी पता है. ओके. सो इक्वेशन डील करना, सो यह सब बहुत आसानी से आ जाता है. सो यू हैव दिस, यू सिंपली हैव अ ट्रायंगल कंस्ट्रक्टेड, दिस इज डायमीटर, तो ये बीच में आएगा. सो देन यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट this relation, area is equal to, you have to just use the area triangle formula. So this is equal to this, and you will be able to get, see, BD. Why am I trying to find BD? Because this is what the sine is. समझे? ये D BD जो होती है वही साइन फंक्शन है. इससे हम, हाँ, यस, मल्टीप्लाई बाय 225. करेक्ट. और वो जो 225 था उसका फर्स्ट वैल्यू था. हाँ, जो हमने जो सीरीज बनाई थी. ओके. Let the students go. टीचर बारे में हाँ, क्या बोलते हैं? एक चीज 5 से लेके 15 इयर्स के बच्चे की तो उसका लेवल, जो इंटरेस्ट का लेवल मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे हैं ये तो उससे ज़्यादा है इनका. तो ये 5 to 15 नहीं है. ये 5 to 15 में तो हम मान के बिठा सकते हैं. ये 17 के ऊपर है इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे. हाँ, या संस्कृत में एक श्लोक है, लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत. 5 साल तक सो उसको फॉन्डल करना है. ओके. लालयेत means you keep fondling the child, and then for 10 years 5 to 15 उसको थोड़ा पीठ मारना पड़ेगा. दश वर्षाणि ताड़येत, नहीं सुनेगा तो वो नहीं पड़ेगा. ठीक है. दश वर्षाणि ताड़येत, उसके बाद वो फिर हमें मार देगा. इसलिए इसलिए बोलते हैं प्राप्ते तो षोडशे वर्षे. Okay, once he crosses 16, putram mitravadacharet. Say, treat him like a friend and then take him along. ऐसा एक श्लोक है, नीति श्लोक. तो इनको मित्र ही मानना. ओके. देखिए, this is very simple.
See, since there is some curiosity, this basically depends upon very simple algebraic equation. So, you have to just consider a triangle and then you have to just think of this segment. How do I get the segment BD? That is the idea. Okay. Since anyway slides are going to be shared, so you can easily understand. The only thing that you have to keep in mind is I am writing, so BD I get an expression, I am writing this equality into an inequality. Okay. So, if you put 1 by BD, so what I am doing is AB and BC converted into arc, that is it. Once you do this, this is obviously going to be greater. Exactly, exactly. So, you write this expression as x plus y, okay, and then you get some algebraic equation which you have to just solve, and once you equate these two, you will straight away get this, that is it. Okay. It is a very brilliant way of doing this. So, this proof I found in K.S. Shukla. Okay. He was a good mathematician, astronomer and a scholar who was in Lucknow University में पढ़ा रहे थे, तो उनके किताब में ऐसा है, और 2-3 तरीके भी है, इससे हम इसको निकाल सकते हैं. ओके, भास्करा सिद्धांत शिरोमणि, would you like to quickly run through or? You have? Okay. Okay, Nityananda, okay. We will leave this Bhaskara thing. Okay, you will sing some nice things. Come, we will chant some verses. Okay, just see this Nityananda. We have been, I will tell you, ये तो हिंदी में बता देता हूँ. ये जो मैनस्क्रिप्ट है, ऐसा एक मैनस्क्रिप्ट मिला हमें. ये नित्यानंदा का जो किताब है अभी तक छिपा हुआ नहीं है, ठीक है, वो स्टिल मैनस्क्रिप्ट फॉर्म में ही है. तो हमने एक बार न्यूजीलैंड गए थे, तो इनके साथ, तो इन्होंने बुलाया, हमने इसको पढ़ने का शुरू किया. तो ये मैनस्क्रिप्ट से निकालना, ये तो बहुत अच्छा मैनस्क्रिप्ट है, ये हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, और कुछ कुछ में बहुत ख़राब होगा हैंड राइटिंग. हाँ देखिए, एक दिखाता हूँ. हाँ, some poor manuscript, where is it? Anyway, देखिए ऐसा कुछ कुछ बीच में डाल देते हैं, वो कुछ दंड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये बहुत तकलीफ़ है. तो बहुत तकलीफ़ से हमने इसको वो पेपर बना दिया. ओके, देखिए, he says नवत्तिंश जीवा भवेद्व्यासखंडम तदर्थम खरामांश जीवा निरुक्ता तदर्थोनितं विस्तृतेरंघ्रिवर्गात् सपादात् पदं ज्याष्टचंद्रांशकानाम्. सो ऐसा बहुत अच्छा नाइस साउंडिंग मीटर पद्य है. ऑलमोस्ट 80 वर्सेस प्लस आर देयर. ओके, so he has done only for science. Okay, the most important thing इधर आपको देखने में यही important, ये देखिए sin 18 निकालता है. So in the other table you will not get sin 18. भास्करा भी किया है, ये दूसरा फार्मूला दूसरा तरीके से एक बताता है. Now देखिए, this is sin of theta plus phi, sin of theta minus phi. How do you add two angles of sine function? See, you have something, no? For something you have plus some छोटा है, तो interpolation तो एक तरीका है. But if you do the sin a plus b formula, sin a plus b क्या है? sin a cos b plus cos a sin b. A minus b? Minus. Right. So this is something which has been nicely stated in this verse. And he proves this. See, how do you know that it is sin a cos b plus cos a sin b? तो इसके लिए एक नाइस ज्योमेट्रिकल प्रूफ देता है, ठीक है. तो वो कैसा प्रूफ निकालना
उसको पूरा पद्य है. So we put almost 2 weeks, more than that. So more than that. Yeah. So there are, this is one aspect. Then there is another aspect which is far more interesting, sine of 1 degree. Okay. It's a cubic formula. Okay. It's very interesting. We just spent quite a bit of time in trying to decipher that. And 6 weeks. Yeah, I went in a fellowship here. Hey, dekhiye, this verse is very simple. Clemency, you want to read the verse? What's the meter? Yeah, Arya. Anyonya koti maurvya gunite ye cheshtachapayor durjye trijyodhrite tayor yaha yogassa chapayogajya. So chapayogajya means sine of a plus b. This other one. Anyonya koti maurvya gunite ye cheshtachapayor durjye trijyodhrite tayor yaha viyutissa chapavivarajya. See, same verse. In one place it is addition, other place it is subtraction. See, that is all. See, Anyonya koti maurvya. See, suppose you have sine of theta, theta and phi, let us say, or a and b. So, Anyonya koti maurvya. See, maurvi. What is maurvi? Maurvi. Urvi is Prithvi, Maurvi. Twin, right? Or side of Lord. Correct. Maurvi. In fact, we have this Maurvi Dhanushija Tata. Normally, you will not find the string tied in the bow. Whenever they have to do, they will tie it out. Okay? Only when it is to be found. Otherwise, there will be a lot of stress. Okay? The string will be continuously expressing stress. So, usko, see, that is why Maurvi Dhanushi Chatata is a phrase which Kalidasa uses. Dhanushi is bow. Maurvi is same as Jya. Okay. So, now he says Anyonya koti maurvya. See, you imagine A and B as two angles. So, sine of A into cos of B, then cos of A into sine of B, इसलिए अन्योन्य. Understand? See, एक का साइन निकालो, दूसरा का cos निकालो, और पहले का cos निकालो, दूसरा का साइन निकालो. यही बोलता है अन्योन्य कोटि मौर्व्या. Gunita means multiplied. Okay. Jya is one thing, koti is cosine. Okay. इसका cosine निकालो और उसका sin निकालो. Something like that. Okay. Ishtachapayoho durjye. See, Ishtachapa means two desired angles. See, chapa is basically angle. Okay. Two different sets of the arcs. Okay. For that you find the sine and cosine and then multiply with each other. Then Trijyodhrita. Udhrita means divided by r. Why divided by r? Because you need to get the dimensions correctly. See, we always specify in terms of r sign, right? So, isliye you have to divide by that. Yogaha, you add that, that will give you Chapa Yogajya, sine of a plus b. Okay. So, similarly sine of a minus b. So, this is the formula that he basically gives. Here comes the most interesting part. So, I will ask her to do. We do it together. We do it together. Yeah. Okay. Okay. This one we broke our head. We were like, Yeah. These aren't even words in the Sanskrit dictionary. Correct. See, this is very beautiful. Read. Kakha gagham bhumi taleshu mandalam
ngakendrakam karkatake sadhayet kacham chacham chapayugam kangam changam changam kramat vyasadalattrayam likhet. This is basically a set of some 8 verses are there. All are in the meter called Vamshastha. So this is basically graphically describing. See, draw a circle, place the points A, B, C, D. See, that is like that. How does he say? Kakha gagham means like A, B, C, D. You understand? So देखिए, see, kakha gagha. This is the circle. Bhumi taleshu mandalam. Draw a circle. Kakha gagha. Titled Kakha gagha. Kakha gagham bhumi taleshu mandalam. Then Nakendrakam. Kendra is center, which has Nga as its center. Okay, draw a circle with O as center, we say. Here he says, draw a circle Kakha gagha with Nga as center. Okay, Kakha gagham bhumi taleshu mandalam Nakendrakam. How do you do? Karkatake sadhayet. Use a compass to get this done. Okay. Then kacham chacham. See, chapa yugam. Chapa yuga. Chapa is arc. Yuga means 2 different arcs. Okay. One arc is kacha. The other arc is chacha. You see. इधर देखिए, नो हाँ करेक्ट, कच्चा एंड चच्छा, ठीक है। ये तो हमें कुछ जर्नल के लिए निकालना था इसलिए इसमें डाल दिए। वो जर्नल तो जो देवनागरी नहीं जानते हैं इसलिए ऐसा पिक्चर ऐसा है। सी कच्चा एंड चच्छा आर द 2 आर्क्स. So you can take this arc to be some theta, the other arc to be phi, or A and B, ठीक है। So he say कचम चचम चाप युगम, इसको मार्क करना है। उसके बाद क्या करना है, ये लाइंस ड्रा करना है। सी जॉइन इट टू द सेंटर, ठीक है। सो मार्क द पॉइंट्स एंड देन ड्रा इट टू द सेंटर, बोलते हैं ना, वही बोलता है। देखो सी कंगम चंगम छंगम, सो सबको इधर जोड़ना है। सी कंगा चंगा एंड छंगा, ठीक है। सी कंगम चंगम छंगम क्रमात्, क्रमात् सीक्वेंशियली 1 by 1। वो क्या होगा, वो सब रेडियस होगा। व्यास दला, व्यासा इज डायमीटर, दला मीन्स हाफ। सी व्यास दल त्रयम, सी ड्रॉ 3 रेडियाई वेक्टर्स, ओके। यह बहुत अच्छा है ना। कखा गगम भूमि तलेषु मंडलम नकेन्द्रकम कर्कटके न साधयेत कचम चचम चापयुगम कंगम छंगम छंगम क्रमात् व्यासदलत्रयम लिखे। अभी थोड़ा इसको याद है, हम जब पढ़ रहे थे 6 साल पहले, पूरा कंठस्थ किए हमने। ये कार चलाती है, मैं बताता हूँ। हाँ नहीं, वो तो संस्कृत पहले सीखी थी, ये श्लोक बहुत जानती थी। अभी थोड़ा 6 साल हो गया, ये कोविड भी आ गया, भूल गया। थोड़ा याद, नो आई मस्ट टेल यू, सी नहीं वो कुछ लोगों को ऐसा कुछ माइंड में ही फ्रेम कर देते हैं, ठीक है। मैं बहुत वर्ष सिखाया था, 3 घंटा हम कार चलाते हैं, तो बहुत उसी में ही चलाते चलाते थोड़ा 3-4 बार बोलेगी, आ जाता है। हाँ, वो कई वर्ष जानती है, अभी तो रिवाइज करने के लिए समय नहीं मिला। ओके, सो आई वाज जस्ट टेलिंग that as you keep driving the car, we used to chant the verses and memorize. See, not only mathematics, वो कालिदास का भी वर्ष बहुत हम पढ़े हैं, मेघदूत का। We never had an accident. Yeah, never had. I always keep my eyes on the road. Yeah, road, eyes will be connected to the road, mind will be connected to the verse. Okay, very good.
ये सब ऐसा होता है. So then say there is a nice geometry. देखिए, so I just showed it in a different picture. See, with this we will wind up. See, we just wanted to excite the mind. So the sin A plus B you have to prove. You see in the diagram, the problem is to be understood. ये देखिए, ये theta है. I want to find sin of theta plus phi. है ना? That is the problem. Sin A plus B. So let us say kacha is theta and chacha is phi. Right? So what is it that I had to find out? What do I know? ये तो मुझे पता है. What I want to find out is sin of phi plus theta. Sin theta is known to me. Sin phi is separately known to me. But what I don't know is theta plus phi. Right? So here, so cha ja is known and cha ja, that is sin phi. Correct? So this is known to me, this is known to me. Correct? Once I know this, I also know this. See, ngaja and ngaja, that is cos. Okay? I know both. What I have to find out is basically cha ta, sin of theta plus phi. This is the problem. So this is how he nicely describes. ये सब डाल दीजिए, ये डाल दीजिए, ये डाल दीजिए, यहाँ से यहाँ perpendicular डालो. Right? This is the problem. The problem is I know this, I know this. Okay? And once I know this, I know all this. So by simply looking into similar triangles, so how do you get the formula? See, sin theta cos phi plus cos theta sin phi. Okay? This is what we need to find out. So for that, he just makes some arguments that this triangle is that triangle, etc. So we had to really break our minds, okay, to get the diagram fixed from the description in the verses. There were about 6-7 verses which are there. So for that he asks us to, one interesting thing that he does is, see, so he tries to present that this see, you see in the diagram this does not look evident, but he brilliantly brings this. This cha ja is basically sin theta. Okay? He just says that cha ja is same as jha ta. देखिए, ये cha ja जो है और यह और ट झा जो है वो दोनों समान है. It is not pretty evident. So we had to really struggle for 2 days to really get this, but it was a joy. Okay. So he just describes. You don't evidently see that by simple geometry, but you have to just do various kinds of projections and you will get that. And he does not do that. He actually makes you draw some other figure, okay, draw various circles. तो कई वृत्त डाल के इधर से उधर थोड़ा प्रोजेक्शन करके देखेगा तो अपने आप दिखेगा, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं. Okay, that is the interesting part that he has done. This is called Shilpa. Okay, Shilpa means drawing this arcs and geometry kind of a thing. Shilpena, right? That's what he is using. Okay, through Shilpa you will be able to get. So that is an interesting discussion which he presents in a few verses, and that is how he proves. ये सब थोड़ा you said this is the demonstration of the equation rests on the following equivalence. मैंने बताया ना. So झटा is झजा, ठीक है. So झटा is झजा. So this is where the crux lies, and once you know that you will be able to prove that this formula is perfectly all right. तो वो करके दिखाता है. So this is the geometrical construction. ये देखिए, ये इसमें ऐसा एक सर्कल डालो और ऐसा एक सर्कल डालो और इसको कनेक्ट करो. ये करेगा तो अपने आप तुम्हें समझ में आ जाता है.
I'll just show you, carefully see this diagram alone. Just see this, just for the sake of fun. So now he asks us to draw some diagram, wo chhod denge. Okay, you do all this. Now you have a circle, blue circle. So the radius of this circle is 6 ठीक है. और इससे जो कुछ ज्योमेट्री बताता है, दूसरा सर्कल करेंगे, उसका भी रेडियस यही होगा, एंड दैट विल एक्चुअली पास थ्रू दिस. ठीक है, वो ज्योमेट्री से अपने आप आ जाता है. ही इज एंजॉइंग, दैट्स इट, दैट्स ऑल. ये वाउ फीलिंग होना चाहिए. सो दैट इज व्हाट ही डज. ठीक है, ब्यूटीफुल वे ऑफ प्रूविंग. ओके, so various things he asks us to do, and this is proved, and this is the kind of diagram that is there. Very, very confusing, terribly confusing. वो जो मैनस्क्रिप्ट से कोई कॉपी करता है ना, वो कुछ नहीं समझता है. वो कॉपी करने में भी थोड़ा तकलीफ हो जाता है. तो अभी किसी को टाइपिस्ट करने के लिए आप बता देते हैं, तो मैं गुजराती नहीं जानता हूँ, मैं टाइप करूँगा तो क्या होगा, तो ऐसा होता है. तो ऐसा ही कॉपी होता है. ये मैनस्क्रिप्ट तो बहुत साल नहीं रहते हैं, तो 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 100 ईयर्स, मे बी 150 ईयर्स मैक्सिमम. उसके बाद तो कॉपी करते करते रहना पड़ेगा. ठीक है, तो वो मोबाइल से कुछ नहीं ले सकते हैं. सो दैट इज़ हाउ इट हैज़ बीन. सो देयर लॉट ऑफ करप्शन हैज़ बीन देयर, बट एनीवे देयर इज़ अ लॉट ऑफ फन इन डूइंग दिस. वो ये सब ऐसा करके करके बड़ा बड़ा टेबल निकाल देते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल बेसिकली फॉर कंप्यूटिंग प्लानिटरी पोजीशंस. सो ह्यूज नंबर्स विल बी देयर, यू ट्राई टू डील विथ. सो वो सब इधर कर देते हैं. सी ये सब देखिए, जीवा कोष्ठका मतलब, जीवा का मतलब जुपिटर. सी, सो दिस विल बी रनिंग फॉर फ्यू पेजेस. सो ऐसा कुछ बहुत टेबल्स निकाल देते हैं. हाँ, वो तो पहले जुपिटर करके पहचानना पड़ेगा. तो उधर देखना है. तो देन ओके, जुपिटर कितना समय लेता है धरती को घूमने के लिए? यू डोंट नो पीरियड ऑफ जुपिटर. सन तो पता है ना, हाउ लॉन्ग डज इट टेक? 365 रफली. ओके, 365.25 प्लस होता है. और जुपिटर का लगभग 12 साल होता है. सी, सैटर्न का लगभग 30 साल होता है. सी, एक बार घूमने के लिए. सी, एज इट गोस अराउंड द सन, इट ऑल्सो गोस अराउंड द अर्थ. राइट. सो ऐसा उन सबको निकालने के लिए सो ये सब टेबल बना देते हैं. सी, दिस इज, देखिए इतना छोटा छोटा लिखता है, वो चींटी जैसा दिखेगा. ये देखो, ये बहुत है. एक ही पेज. हाँ, exactly, correct. So this is sign values, sign table. You tell something. So I think the point, the contrast here, so we've been talking about algorithms and versified sign tables, but this is to contrast, to show the point that, actually Indian mathematicians eventually started putting numbers in tables. And just like in Excel spreadsheets, but unlike Excel spreadsheets, they had to compute every entry by hand. So for the bigger the table, the more time it took. And if you can recompute sometimes, for this last one here has over 5,000 entries. If each of those entries took you, say, 10 minutes to compute, we're talking about years of work, and checking and all the rest of it. It's a very huge endeavour. Yeah, so we've got some tables here. This is the Rajamaganka in Western India, produced in the beginning of the second millennium.
And you can see here, you go to the table. The interesting thing about tables in India, unlike in other civilizations, is because manuscript paper is usually wider than it is deep, that the tables, unlike Excel spreadsheets which go downwards, they go along the top and the entries hang underneath, okay? So for instance, we can go along here and see the argument, 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree, 5 degree, 6 degree, all the way to 20, and then we go around the corner. 21, 22, 23, 24, 25, etc., all the way around the corner to 40, and then we get to 60 down here. And these are the sign values, and underneath we have the differences between subsequent entries. There's a wee bit of calculus for you, but probably these differences were useful for interpolation purposes if you wanted a more precise value of sign. But always with the sign table, you go right to the end, the sign of 90 degrees, which here is 1,000. So this radius is 1,000. So you can see how we start and get closer to the modern unity radius here in the 10th century. And interestingly enough, the Ramajramaganka, Bojaraja, includes not one, but 2 sign tables. This one's just slightly different, and the precision of the numerical values can help modern historians reconstruct the processes used to generate the tabular values, be it an algebraic approximation like Bhaskara 1, or a geometric approximation, or a recursive algorithm. The precision, we ask ourselves, what story do the numbers tell? Very much the precision will reveal the process that was used. So everybody has their own sign table. Here's another one by Nityananda, who had that beautiful rule. And again, going straight down to the important values, sign of 90 here. And you can see his sign table has a precision. Here's a good one, the sign of 30. Where's the sign of 30? 29, 30 is 30, 30, 0, 0, 0, 0. So it's a very precise table going down digits, and its subsequent sexagesimal parts. And the sign of 90 is 60. Yeah. So that's very much sexagesimal, of great use to astronomy right away. That worked in base 60. But Nityananda, in a different work, had another numerical table. Here's the wonderful one that zooms in, which had over 5,000 entries on the table and its differences to 3 sexagesimal places. And so this one really was, actually this is a declination table, Kranti, no, never mind. But this one would be, of course, if you wanted a very precise value. However, this was almost mathematical virtuosity. No astronomer, when they were looking at the sky, could ever use the precision afforded in these tables to affect the level of what they could observe. So we see here the arising of a more pure mathematical endeavour when it comes to trigonometry beyond what is empirically useful for astronomers. So we see a really interesting shift when scholars such as Nityananda are looking at the sign of 1 degree. So we'll leave you with that epic work there, I think, and maybe concluding thing. And come to some concluding thoughts. Few concluding remarks. देखिए, so ये आप मन में रखना, किसी ने 120 लिया, किसी ने 150 लिया, किसी ने 60 लिया, किसी ने 90 लिया, किसी ने 1000 लिया, right? So you find at least all of them. So you can choose whatever radius you want, and the whole table has to be listed along that line. See, ये तो हमने देख लिया, किसी ने 150 लिया रेडियस को, 120 लिया वो वराह मिहिरा ने, अभी ये 60 लेता है और 90 कोई लेता है. So there are some very interesting attempts which have been made by people. So this is one form of evolution that you see. And of course, very important thing. The last thing that I wanted to tell you was, just look at that. You don't need to much bother about it. This is Kerala mathematicians' contribution. Sine ko series pakad liya. See, all of you should have studied at least when you do this. See, sine theta is theta minus theta cube by 3 factorial plus theta to the power by 5 factorial. 11-12 नहीं पढ़ते हैं,
उसमें तो आता है सीरीज। हाँ सी, नहीं आता है, दे गिव दैट, दे मे नॉट प्रूव बट दे गिव दैट। सो आईने सुना। एनीवे sin थीटा इज थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा पावर 5, हाँ ऑफ कोर्स, हाँ 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, दिस इज दी सीरीज एक्सपेंशन। पाई का भी ऐसा सीरीज है, राइट? पाई cannot be written without a series in the right hand side, because if it is a non terminating infinite series. See, that is why we have to say it is irrational number. Irrational means if it is a finite series, it will become rational. Therefore it, ये इतना ही मैं बताना चाहता था। इसको सीरीज को ऐसा दिया है, देखिए, दिस इज 14th century. Normally it is ascribed to Newton. See, 3 centuries later, sine series is ascribed to Newton. So to pi series is ascribed to Gregory. बट दोनों को माधवा ने किया 14th century में। एक ऐसा लिखता है, निहत्य चापवर्गेण चापम तत्तत् फलानि च हरेत् समूल युग्वर्गैः त्रिज्यावर्ग हतेः क्रमात् चापम फलानि चादोधो। सी, चापवर्गा मीन्स r theta, arc. Varga means square. Nihatya means multiply. See, you multiply all of them. You take r theta, multiply by r theta square. और इसको फिर n1 को लेके फिर r theta square से करो, वो न्यूमरेटर सब आ गया, थीटा, थीटा क्यूब, थीटा पावर 5। ठीक है, ये सब न्यूमरेटर निकाल दिया। डिनोमिनेटर में क्या आता है? 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। उसको कैसा बताता है देखिए, 2 स्क्वायर प्लस 2 क्या? 6, 3 फैक्टोरियल हो गया। 4 स्क्वायर प्लस 4 20। नहीं, दिस इनटू दैट, वो तो 3 फैक्टोरियल हो गया। 4 इंटू 5, दैट इज व्हाट इज 4 स्क्वायर प्लस 4। यू अंडरस्टैंड? सो देन एग्जैक्टली 2 कंसेक्यूटिव नंबर मिलेगा। तो उसको लेके डिनोमिनेटर पूरा बना दिया, बस हो गया, तुम्हारा साइन सीरीज बन गया। ठीक है, दिस इज द वर्ड्स व्हिच एक्चुअली गिव्स यू द साइन सीरीज। ओके, नाउ द लास्ट स्लाइड। So this is, it's quite interesting to know the evolution of the different techniques. See, कई तरह से साइन निकाल रहे थे हमारे भारत में, एंड ये 4-5 तरह से हमारा प्रयत्न गया है। देखिए, एक तो है साइन टेबल का एक्यूरेसी बढ़ाना, ठीक है, वो तो कंटिन्यूअस एफर्ट चल रहा था। और दूसरा, साइन ए प्लस बी कैसा निकालेंगे, ए माइनस बी कैसा निकालेंगे, उसके लिए भी व्यवस्था हुई। और तीसरा तरफ ए रैशनल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। सो हाउ डू यू प्लग इन द वैल्यू एंड गेट द साइन वैल्यू, दिस इज अनदर काइंड ऑफ एफर्ट। एंड देन ये हमने नहीं दिखाया आपको, कोई ऐसा भी प्रयत्न किया है गणेश देवज्ञा करके, वो साइन को भी छोड़ देंगे, वो दूसरा तरह से उसको अप्रॉक्सीमेट करके, अमेजिंग है, वो दूसरा अटेम्प्ट है। ओके, यू neither have rational approximation nor have this thing, but somehow other ways of integrating this sign, that is something which is brilliant. And lastly हमने देखा ये इसका infinite series भी बन गया है, ठीक। So that way you see that the whole evolution of sine function trigonometry, ये बहुत अच्छा, हमने थोड़ा उसका पूरा स्वरूप नहीं बताया, थोड़ा थोड़ा प्रयत्न किया है। तो ये किसके लिए चाहिए था, ये सब मैंने पहले ही बताया आपको। ये प्लानिटरी पोजीशंस को जितना सूक्ष्म हम निकाल सकते हैं उतना सूक्ष्म निकालना है, उसको निकालने से ही हमें समय का पहचान हो सकता है, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। सी, द सन एंड द मून आर आवर टाइम कीपिंग सिस्टम्स, और दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। ये सन, टुडे वी नो इट इज एट द सेंटर एंड द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। ओके, सो इफ द रोटेशनल पीरियड ऑफ द अर्थ थोड़ा बदल गया तो क्या होगा? साल में दिन बदल जाएगा। सी, टुडे वी से 365.25, सो सपोज द अर्थ स्टार्ट्स रोटेटिंग मच फास्टर, कितना दिन होगा?
हाँ, साल में दिन बढ़ जाएगा. Earth rotates fast. If Earth rotates faster, in fact, Earth was rotating faster, slowly decreasing now. At one point, we had more than 400 days in a year. It is not a joke. ये हंसने की बात नहीं, ये समझने की बात है. Okay? It's because of population increase. आबादी बढ़ रहा है इसलिए. इसके लिए क्या होना चाहिए? सुनो, this is an interesting thing. So in order to finish people, the earth create its own way. तो ये बड़ा भूकंप आया ना, ये 2011 में जापान में एक आया, उससे 10,000 लोग मर गए. तो उससे क्या हो गया? स्पीड ज़्यादा हो गया. So there are various things which are happening. Okay? मैं इसलिए बता रहा था, तो ये तो हम सभी समय के लिए ऐसा निकालेंगे, ऐसा तो नहीं ही है रास्ता. Okay? So this is what it is. Accuracy in planetary positions, accuracy in determination of tithis and so on. Then only the whole thing is complete. Thank you.